Your team is banned. has awakened. चालू करूँ? ओके, चलो आज आते हैं और एक नया दिन के साथ एंड इसी बात पे आज का डे नंबर 4 नॉकआउट स्टेज स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट मैच काफी शानदार टीम आई है हमारे पास एंड एक साइड पे है टीम अंजिंग, वो ब्लू साइड पे है एंड टीम इवेंगलिस्ट आर ऑन द रेड साइड। नो, इवेंगलिस्ट ब्लू साइड पे और टीम अंजिंग रेड साइड पे। तो उसी के साथ हम चलते हैं मैच की तरफ। बैन स्टार्ट हो चुकी है दोनों के दोनों साइड से, काफी इंटरेस्टिंग बैंड हो रहा है। कुफरा बाहर, यूरानस भी बाहर। एक बात है कि दोनों के दोनों काफी अच्छा हीरो है ब्लू साइड पे जो भी बैन कर रहे हैं एंड May the blood of my enemies flow from my spear. तो उसके साथ उनका लाइक थोड़ा बहुत मोबिलिटी हीरो लेना है। उन्हें एक हीरो चाहिए जहाँ पर उन्हें वो रोक नहीं पाए, तो उसी की वजह से वो सब बैन हो चुका है। बट अभी और दूसरे साइड पे थोड़ा कंफर्ट हीरो बैन हमें दिख रहा है। फ्लोरीन बैन, द गोशन बैन और उसी के साथ ब्लूबी। तो वो एक बात है कि कंफर्ट हीरोज जो इंस्टेंट बर्स्ट है वो सब निकाला गया है। बट ये मिनसितार बैन जो था उसके साथ आई थॉट इट वुड बी अ हैरिथ का चांसेस ज्यादा था, बट नहीं, इट इज गोइंग टू बी ए लैंडस्लॉट। फर्स्ट पिक लैंडस्लॉट काफी थोड़ा सा लाइक डाउट की बात है क्योंकि अभी भी वाईएसएस ओपन है। बाक्शिया जंगल भी जा सकते हैं एंड काफी ज्यादा कंफर्टेबल हीरोज है, बट नहीं अदर साइड पे जेशन और उसके साथ आ रहे हैं गटुर काचा। एज ऑफ नाउ गटुर काचा लॉक कर दिया गया है। चलो बढ़िया बात है क्योंकि गटुर काचा का जो टॉन्ट है, जो एओजी है, बहुत ही एक ये देता है टीम फाइट में काफी ज्यादा ही डैमेज के साथ डैमेज। तो अगर डैमेज जा रहे हैं, अगर ये EXP है तो थोड़ा बहुत चांसेस है EXP जाने का, तो मे बी वहां पर हमें देखने मिल सकता है कि कैसे खेलेंगे। बट देखते हैं, अभी के लिए तो फ्लेक्स हीरो है, बट अदर साइड पे काफी खतरनाक हीरो लेके आ रहे हैं। केलिया और सुशिन, केलिया काफी अच्छी है टू स्टन करने के लिए एंड स्टन के साथ तो जूशिन का भी पैरअप काफी अच्छा है। थोड़ा सा उन्हें माना का प्रॉब्लम होगा क्योंकि नए बैच में काफी ज्यादा ही नर्फ किया है उसे, बट इसी के साथ चलो देखते हैं दूसरी साइड क्या लेगी। अभी उनके पास एक चांस है टू काउंटर द जंगलर, और या तो उठाए ऐसा हीरो जो मार्क्समैन हीरो की वो अपने हाथ में कब्जा करे और बैन लिस्ट में ना जाने दे। ऐसा जो हीरो है मैं बात कर रही हूँ, तो वो हुआ ग्रेंजा इरेथेल। अभी तो एक शेवी काफी अच्छी है, उसी के साथ तो एक नया स्किन भी निकला है उसका, मेट्रो स्किन का, मेट्रो जीरो का। तो डेफिनेटली वो भी चेकआउट कर लेना शॉप पे जाके। एंड उसी के साथ एज ऑफ नाउ वापस बैन लिस्ट में जाते हैं, बट बैन लिस्ट के पहले मैंने एक देखा है कि उन्होंने अल्फा लिया है। अल्फा अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है, तो मे बी नॉट EXP अल्फा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्स हीरो है। अल्फा को EXP में खेला जा सकता है, बट ज्यादा प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो उतना टैंक ही नहीं है और उसे स्पेल वैम्प चाहिए टू एक्चुअली गेट अ गुड स्टार्ट फॉर हिम। बट उसी के साथ हाँ, ये हमारा हुआ 4vs बैन। तो 4vs के साथ तो डेफिनेटली वो लग रहा है कि अल्फा EXP जा रहे हैं, बट क्या जंगलर खेलेंगे, क्या मार्क्समैन लेंगे। अभी मार्क्समैन को टारगेट किया जाएगा, जैसे हम इरेथल को देख रहे हैं। वन मे बी मॉस्को हो सकता है, मे बी वो ग्रेंजर भी हो सकता है, या और एक EXP लेनर, या तो एक जंगलर के नाम पे आई थिंक फैनी भी काफी अच्छा बैन हो सकता है यहाँ पर, अनलेस उन्हें पता है कि फैनी लेते हैं या नहीं। बट नहीं, आउट ऑफ द वे काइंड ऑफ ए बैन दैट मुझे नहीं देखना था CC, क्योंकि वहां पर EXP और टैंक दोनों साथ में है। गटुर काचा गोल्डन नहीं जा सकते, ही इज गोइंग टू हैव सच अ हार्ड टाइम। तो आई थिंक दैट्स द रीजन। तो थोड़ा बहुत मिसकैलकुलेशन हुआ रहेगा वहां पर उनके ब्लू साइड से, बट कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं काफी बढ़िया सेट मेकर टीम के साथ। हम देख रहे हैं पड़ांग
और हम देख रहे हैं ग्रेंजर। ग्रेंजर मुझे देखना है क्योंकि आई थिंक ग्रेंजर के पास काफी ज्यादा ही यू नो एक एक स्नोबॉल का पोटेंशियल उसके हाथ पे ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, सो मुझे वो देखना है क्या है कर The सकते hunt हैं। begins. बट उसी Your के team is साथ picking. अदर साइड में क्लिंट आ गया है। क्लिंट को आई थिंक छोटा सा बफ मिला है, आई फील लाइक मैंने पैच नोट्स अब तक पढ़े नहीं है, बट आई थिंक मुझे जान देखना पड़ेगा। तो उसके साथ क्लिंट का डैमेज काफी ज्यादा पड़ रहा है, तो आई थिंक वो क्लिंट का मेटा वापस आ रहा है। एंड ग्रेंजर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आने वाला है अर्ली गेम, क्योंकि एक तो क्लिंट बहुत पोक करेगा, उसका जो स्किल वन है वो डेफिनेटली एक काफी ज्यादा ही पोक करेगा ग्रेंजर को। बट ऐसे जैसे हम मिड गेम जाते हैं तो हाँ एक आएगा कि क्लिंट को भी पोक उल्टा वापस से पड़ेगा। सो मुझे देखना है क्या होगा गोल लेन पे। बट उसी के साथ टीम अंजिंग देख रही है क्या लेंगे जंगलर पे, तो मतलब अल्फा EXP है और गटुटकाचा टैंक है। क्या वो आलू कार्ड के पास जा रहे हैं, Demons आलू shall कार्ड bathe ले in their रहे हैं, blood. तो The light क्राउड belongs to the कंट्रोल तो काफी righteous. ज्यादा ही पड़ने वाला है। स्केलिया, उसके ऊपर से जोशिन, उसके ऊपर से रूबी, एंड देन लांसलॉट का डैमेज, उसके ऊपर से ग्रेंजर का डैमेज। तो मुझे देखना है आलू कार्ड कैसे बच जाते हैं, या आलू कार्ड मेनियक भी ले सकते हैं। आजकल रैंक पे तो ज्यादा मैंने आलू कार्ड देखा है भाई, मेनियक ट्रिपल किल ऐसे ही ऐसे फ्री का माल है जैसे लेके जाते हैं। तो मे भी ये गेम पे भी वैसा गेम प्ले देखने मिलेगा, बट अभी हम सबको पता है ये मोबाइल लेजेंड्स 5v5 है, सो एक ही विनर हो सकता है। तो आज देखते कौन होगा। उसी के साथ हम जा रहे हैं लोडिंग स्क्रीन पे। एंड गाइस गिव अवेज है, तो मतलब अगर 100 लाइक मिला ये वीडियो पे तो एक स्टार लाइट एक लकी विनर को मिलेगा। सो डू लाइक द स्ट्रीम, डू कमेंट विच टीम आप सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे देखना है क्या है। और उसी के साथ मैं बताती हूँ वापस से टीम कौन सा है। एक साइड पे ब्लू साइड पे टीम इवेंगलिस्ट है, एंड रेड साइड पे टीम अंजिंग है। एंड उसी के साथ जा रहे हैं लैंड ऑफ डॉन। Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the ओके battlefield. Smash पहुंच them. गए लैंड ऑफ डॉन की तरह। यहाँ पे थोड़ा बहुत जल्दी रोटेशन देखने मिलेगा हमें लांसलॉट के हाथ से, क्योंकि उनकी टीममेट्स काफी ज्यादा सपोर्टिव है, तो आई थिंक उनको एक अपर हैंड मिलेगा। बट उसी के साथ गोल लेन पे कितना सपोर्ट देंगे, तो वो दोनों के दोनों टीम है, स्पेशली क्लिंट और इवन ग्रेंजर को काफी ज्यादा ही सपोर्ट है, तो आई थिंक वो काफी ज्यादा मायने रखेगा। एंड इसी के साथ थोड़ा बहुत ग्रेंजर सेफ खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि कैसे क्या खेलना है, तो सर्टिफाइड बॉय क्या करेंगे। यहाँ पर लीथो के लिए थोड़ा बहुत हमें कंटेस्ट दिख रहा है, कटुक अच्छा है, तो आई थिंक लैंसलॉट उतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेंगे, बट अगर लगा तो लगा, वो ही होने वाला है। एंड ये गया लीथो अपने लैंसलॉट के हाथ पे। बॉट लेन पे जल्दी से जल्दी आते हुए लेवल 4 नहीं हो पाए, तो आई थिंक क्लिंट को यही टाइम पे थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा। एंड ना लेवल 4 अभी तक नहीं, क्रीप वगैरह लेके आ ही जाएंगे। पर आगे देखते हैं फर्स्ट ब्लड। मुझे फर्स्ट ब्लड देखना है, कौन सी टीम क्या लेके आओ। थोड़ा बहुत यहाँ पे प्यूरिफाई हमें दिख रहा है क्या से, बट नहीं बूढ़ा बूगा जो अकेले जो है, तो काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं से, बट लांसलॉट आते हुए, बट नहीं वो टॉन्ट रोक देते हैं। नामी फर्स्ट ब्लड लेते हुए, ये हो गया गटोट का चक्कर, थोड़ा ओवर एक्सटेंशन। रिवाइटलाइज फेंका है, बट वो उतना हील नहीं कर पाए अर्ली गेम पे। रिवाइटलाइज को भी थोड़ा बहुत HP चाहिए होता है अच्छे से वो करने के लिए। सो अगर हम देखते हैं टर्टल आ चुका है, तो
टर्टल के साथ आई थिंक लैंसलॉट को एक अच्छा सा अपर हैंड मिलेगा क्योंकि उसके पास वो इम्यून का स्किल है। और यहाँ पर किरीटो तो काफ़ी जोन आउट करने के लिए आ चुके हैं अल्फा चार्ज के साथ, इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज देते हुए एंड वापस से टीम इवेंगलिस्ट अपना डोमिनेंस दिखाने हैं। वो उन्हें वो चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा गोल्ड अपने हाथ में है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा किल्स है। डे 1 से और डे 2 डे 3 काफ़ी हमने थोड़ा बहुत वन साइडेड गेम देखे होंगे, बट क्या ये वन साइडेड गेम हो सकता है या नहीं, मुझे वो भी आज देखना है। बट उसी के साथ मिड लेन पे थोड़ा बहुत मिशन आने वाला है। लांसलॉट काफ़ी ज़्यादा फार्म हो चुके हैं, तो लैंसलॉट भी वो एक है कि उसे थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा अपने फार्म के बारे में भी। आलू का थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन तो उनके पास कोई डेथ नहीं है, तो थोड़ा स्लो खेल रहे हैं अभी के लिए। वो काफ़ी एक अच्छा है कि आलू का थोड़ा मिड गेम को लेट गेम खेलना चाहते हैं। ओके, थोड़ा बहुत यहाँ पर फाइट देखते हुए फ्रैंकलिन एक किल लेते एंड यहाँ पर फाइट खत्म नहीं हुआ। ओके, केले के वजह से फ्रैंकिस्टाइन को डबल किल मिला, डबल किल ट्रिपल की तरफ बढ़ते हुए नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत डैमेज बढ़ रहा है। 6 किल्स ऑलरेडी हो चुका है एंड उसी के साथ पुश तो डेफिनेटली है। तो पुश के साथ तो आई थिंक उनको थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा। जितना ज़्यादा पुश करेंगे उतना ज़्यादा मैप ओपन होगा एंड उतना ज़्यादा मैप ओपन होगा तो उतना इजीली क्रिस्टल पहुंच जाएंगे। तो वो एक बात पे आई थिंक वो जल्दी से जल्दी टीम अंजिंग उन्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। 4 मिनट्स इनटू द गेम, 4 मिनट्स पे अभी भी इन्वेड कर रहे हैं आलू कार्ड और ये लैंसलॉट के बीच काफ़ी अंतर दिख रहा है गोल्ड का। एंड ये जो गोल्ड का डिफरेंस है ऑलमोस्ट 2000 गोल्ड का डिफरेंस है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में खेले। यहाँ पर जंप होते हुए के हाथ से अपने जो ग्रिफिन है काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रहे, बट नहीं, ये थोड़ा हादसा जो टीम एवेंगलिस्ट था, आई थिंक उन्हें वो फाइट नहीं लेना चाहिए था। जीशन है, काफ़ी अच्छी हीरो है, काफ़ी अच्छा हीरो है, बट फिर भी उन्हें वो सस्टेन नहीं मिल रहा है। क्या उनके टीम पे एचपी की कमी है? क्या उनके टीम पे वो फ्रंट लाइनर की कमी है? क्या इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे? बट उसी के साथ वापस एक टर्टल आया है। ये पूरा टर्टल देखता है क्या जाएगा कि लैंसलॉट अगेन उनकी और उसकी पूरी टीम जोन आउट कर रही है पूरा रिवर एरिया को, जिसे हम अभी देख रहे हैं। वो भी खेलिया रुके हुए कि वो कोई भी जंगलर स्पेशली आलू का टीम फाइट पे नहीं आएगा। उसी के साथ हम टर्टल लेते हुए आगे जाते हैं अपने गटुटकाचा के पास। गटुटकाचा डाउन तो मतलब इसको वेरी इजी, बट नहीं, एक के ऊपर एक के साथ अल्फा वो उन्हें स्पेल रन के ऊपर रह नहीं पाए, अपना जान गंवा दिए। बट उसके साथ टरेट भी जाने वाला है। लैंसलॉट काफी ज्यादा डैमेज क्लिंट को डिलीट कर दिया, वन शॉट, एक बस सेकंड स्किल डाला और फर्स्ट स्किल डाल के खत्म। भाई क्या ही डैमेज है। वन साइड गेम तो हो ही चुका है, टीम अंजिंग के हाथ पे काफी जा रहा है क्योंकि 13 और 1 के स्कोर जैसे हम देख रहे हैं, वो भी 6 मिनट के गेम पे 3 टरेट उड़ा दिए गए, वो भी सब फर्स्ट ईयर टरेट। सेकंड ईयर टरेट के ऊपर बढ़ते हुए आई थिंक ज्यादा ही प्रेशर पड़ेगा। एंड इसी के साथ एक और टर्टल आने वाला है। थोड़ा क्लोज कॉल रहेगा विद द लॉर्ड, बट अगर टीम अंजिंग लॉर्ड लेके साथ जाते तो आई थिंक बहुत इजी पड़ेगा। एंड इसी के साथ ब्लूम रे आई थिंक उन्हें बहुत खेलना पड़ेगा। वही ट्राई टू देख रहे थे कि स्टार्ट बचा सकते हैं नहीं, बट रूपी क्या ही ब्लडी हुक देखने मिला हमें। एंड इसी के साथ एक मेंबर चाहते हुए अनस्टॉपेबल फॉर नामी, क्योंकि वो तो देंगे, क्योंकि डैमेज देखो 506 के बाद
आइटम्स के बारे में बात करें तो गॉड एक्स के फुल स्टैक के साथ अंदर ग्रुप से, तो आई थिंक उन्हें वो एडवांटेज लेने मिल रहा है जिससे अल्फा को उठाया गया रहेगा। ये कॉन्स्टेंट सीसी क्राउड कंट्रोल में देखने मिल रहा है दोनों के तरफ से। यही मैं बोल रही थी कि आलू कार्ड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देगा, अल्फा को भी प्रॉब्लम दिया, तो यही हम देख रहे हैं। अगर टीम इवेंजलिस्ट को कमबैक करना है तो उन्हें थोड़ा बहुत स्लो खेलना है, उन्हें थोड़ा बहुत टीम को काफ़ी ज़्यादा फॉर्म देना है। तो हम देखते हैं अगर टीम को फॉर्म दे पाते हैं या नहीं। मिड लेन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, टरेट के इनहिबिटर्स, टरेट के क्या बोलते हैं, पैसिव को हटाया गया है। एंड ये पैसिव हटा के लॉर्ड इजीली जा सकते हैं। आई थिंक टीम अर्जिंग टरेट के पास, मतलब टर्टल के पास नहीं जा रहे, तो वो लॉर्ड को देखने के लिए आई गेस वो चेंज होने के लिए रुक रहे हैं। बट लेन सिंह के बारे में बात करते हो, आई थिंक टीम अंजन को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि कैसे ये कर पा रहे, कैपिटलाइज कर पा रहे, क्योंकि एडवांटेज उनके हाथ पे है एंड एक भी थ्रो देखने नहीं मिला, तो एडवांटेज उनके हाथ से और एक बात बनती है कि वो अपने एडवांटेज से खेल रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा टीम अंजिन के हाथ में है। इसी के साथ जैसे मैंने बोला था कि लॉर्ड के पास जा रहे, लॉर्ड ही ले रहे, यहाँ पर कोई कंटेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर टीम इवेंजलिस्ट कंटेस्ट भी करती है तो नहीं बच नहीं पाएगी। एंड इसी के साथ ये आ चुका है मिड लेन पे। आलू कार्ड थोड़ा बहुत प्रेशर देना चाहते हैं, बट आई थिंक वो रोक देंगे। ये अपना जूशन है रोकने के लिए, अपना आलू कार्ड है रोकने के लिए, लैंडस्लॉट भी है, तो आई थिंक वो हो ही जाएगा। जो केलिया और रूबी का जो सेटअप है, तो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों के दोनों सिंक पे है, काफ़ी एक्सपीरियंस टीम लग रही है। सैन इसी के साथ में लेन पे, लेन्स आर ऑलरेडी गेटिंग टेकन डाउन। लॉर्ड आ चुका है टॉप लेन से थोड़ा स्लो आने वाला है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि वो लोग जल्दी से ख़त्म कर रहे हैं अपना मिनियन। तो उसी के साथ 2 जन मर चुके हैं अपने, वो भी टीम इवेंजलिस्ट से। मिड लेन पुश होने जाती है, बट रूबी फ्लिक करके साथ मेकिंग श्योर रूफ को निकाला गया है। बट 2 जन बाकी है इस बचाने के लिए, लॉर्ड आने वाले, बट आई थिंक लॉर्ड के टाइम पे टाइम पे आ जाएंगे, बट क्या वो टाइम पे आएंगे या नहीं वो मुझे देखना है। लॉर्ड आ चुका है इनहिबिटर के पास, अभी भी 4-5 सेकंड बाकी है, तो हाँ रुकता सा आ ही जाएंगे। एक अच्छा एओजी तो देखने मिलेगा ही, बट बेस क्या बेस टारगेट होगा या नहीं। ग्रेन से थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे टारगेट करने को, यहाँ पर मिनियंस भी बहुत आ रहे, काफ़ी आ रहे, थोड़ा बहुत कॉमिट देखते हुए एक रन बचा रहे। गॉड लाइक फॉर दिस ग्रेन इज नॉट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड। डबल किल तो मिल चुका है, क्या उन्हें सैवेज मिलेगा? 3 मेंबर्स अभी भी रुके हैं। दूषित खबर देखना चाहते हैं, ओके केलिया जंप करते हुए ट्रिपल किल तो मिल चुका है। लांस काफी लो है, काफी ज्यादा डैमेज ले रहे हैं, बट ये ग्रेन्स का मेनियक सैवेज नहीं देना चाहते आलू का, और दे दो सैवेज, काफी बढ़िया से खेल रहे थे एंड ये मिल गया सैवेज, पहला सैवेज ऑफ सोआ प्लेज जाता है ग्रेन्स का। इसी के साथ बेस खत्म। Victory! चलो बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की तरह, स्कोर देखते हैं। ये ग्रेंजर को तो डेफिनेटली एमवीपी मिलेगा, तो हाँ मुझे देखना है बाकी मेंबर्स ने कैसे डैमेज दिए हैं। एंड यस ग्रेंजर को मिल चुका है एमवीपी। रूबी ने भी काफ़ी अच्छा खेला है, उनका जो सेटअप्स था, तो उनका टीम काफ़ी क्राउड कंट्रोल ओरिएंटेड था, तो आई थिंक वो प्रॉब्लम आ चुकी थी। एंड इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दूसरी टीम को बुलाते हैं, देखते क्या होगा।
हाँ हाँ। एंड हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका स्वागत है वापस से टीम नंबर 2, मैच नंबर 2 के साथ। ये है डे 4 सोआ प्लेस का मोबाइल लेजेंड्स 5v5 का टूर्नामेंट और हम आए Welcome to हैं World's देखने वो Castle, tiny टीम friend. कॉपी कैट ब्लू साइड में एंड हमारे पास है टीम यमडक ऑन टू द Demons रेड shall साइड। bathe in their दोनों के blood. दोनों The आई light थिंक थोड़ा belongs बहुत to the मैंने मीम्स righteous. देखा है, तो मुझे आई एम लाइक क्यूरियस अपना कैसे खेलेंगे दोनों के साइड, क्योंकि एक दूसरे के लिए तो वो टीम के दोनों के दोनों टीम काफी अननोन टीम है, तो मे बी वापस से हमें वन साइडेड मैच देखने मिलेगा और मे बी नॉट, तो मतलब अभी थोड़े टाइम पे देखते हैं। बट इसके साथ Crowned ड्राफ्ट by चालू हो heaven's चुका है, mandate, ड्राफ्ट काफी my legacy shall इजीली जा endure. रहा है। दोनों की साइड पे एक साइड पे तो हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि कंफर्ट हीरोज बैन हो चुका है, No one आलू can कार्ड escape बैन my हो iron चुका है। fist. ये एक ऐसा हीरो है जो ज्यादा बैन नहीं होता है, बट यहाँ पर टूर्नामेंट में आते हुए लाइक हम लास्ट फ्यू डेज से भी देख रहे हैं काफी ज्यादा ही आलू कार्ड भी ले रहे हैं लोग, तो वो ही रोकने के लिए तो आई थिंक इट्स जस्ट इजी कि उसे अच्छा बैन ही कर दो। उसके साथ देख I am बैन हो not the चुका only है one अपना bound by these बड़ांग chains. बड़ांग फोवियस भी निकल गया है। फोवियस निकल गया तो मतलब आई थिंक कॉपी कैट इजिली जाएंगे एक मोबिलिटी हीरो के पास, Light और will मोबिलिटी fall हीरो prey to बारे में बात shadow. किए तो देखते हैं क्या लेंगे। एंड ये आर्गस बैन थोड़ा थोड़ा मुझे स्केप्टिकल लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अलग सा बैन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे अच्छा बैन ही कर दो अगर तो मेरे देखना खेलना नहीं है, तो मे बी वही कारण की वजह से आई थिंक हम देख रहे हैं। बट इसी के साथ फर्स्ट पे खेल या लास्ट गेम पे खेल या क्या ही पहल के गई वो भी एनिमी टीम को, क्या ये टाइम पे भी वो ही होने वाला है या नहीं, देखते हैं। एंड उसी के साथ केलिया अब तक बैन मतलब पिक नहीं हुई है, बट उसी के साथ आई थिंक बहुत सारा वाईएसएस है। My tail's been देन itching for a real fight. जंगल पे लैंसलॉट भी काफी अच्छा पिक है, तो you मे want to बी make नॉट friends वो with भी हमें Nana? देखने मिलेगा। एंड नाना ओके, थोड़ा सा अलग सा पिक है, wasn't expecting नाना यहाँ पर, बट हाँ आई थिंक वो देखने मिल रहा है। बट इसी के साथ क्या है वन ओके, वन बैन कर दिया है, पिक कर दिया है। काफी अच्छा हीरो है, आई मीन वॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मुझे एक बात है कि उसे थोड़ा बहुत खूफरा जैसे हीरो This land is our homeland, जल्दी से and it जल्दी will उसे soon be our burial रोक ground. सकते हैं, बट नहीं हमें वो नहीं दिख रहा है। तो उसी के साथ थोड़ा बहुत बैक लेन्स पे जंप करते हुए लापू लापू का इंट्रोडक्शन हो चुका है ये गेम पे। लापू लापू के साथ आई थिंक मार्क्समैन में यहाँ पर क्लिंट काफी They call me अच्छा a पिक hero होगा, बट नहीं because I saved my उनकी nation को from जाना falling है apart. वाईएसएस भी काफी एक अच्छा पिक है। एंड वाईएस के वाईएसएस के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत I'm लेट गेम bound के by पास जाता है। nothing, be it लेट family गेम or चाहिए रहता तो destiny. पूरा अर्ली गेम फार्म, मिड गेम भी फार्म, टोटल लेना थोड़ा मुश्किल है अनलेस पूरी टीम आती है यहाँ पर टोटल हेल्प करने के लिए। अगर वो हेल्प नहीं कर रही है तो इगोशन से बर्स्ट होने का काफी ज्यादा ही चांसेस है। बट एक साइड पे मेटा हीरो, एक साइड पे कंफर्ट हीरो, क्या Experience the हालत euphony of होगा ये मैच का, थोड़ा suffering. बहुत क्यूरियस हूँ। बट उसी के साथ बैन फेस पे वापस से आते हुए ग्रेंजर आउट ऑफ द वे, इरथल भी जा सकता है, बट खूफरा बैन कर चुका है। काफी अच्छा बैन है क्योंकि वो जो बाउंसिंग बॉल जो है खूफरा का वो रोकना नहीं चाहिए अपने मेंबर्स को। सो आई थिंक उसी के साथ
ये बैन कर दिया है, बट आई थिंक और एक EXP लेनर बैन होगा टीम कॉपी कैट की तरफ से, बट ऑन टू द साइड ऑफ May the टीम blood of my enemies यमदा flow from क्या my बैन spear. करेंगे? मिन सितार बैन, Muscle of ओके। iron. ये मिन सितार बैन Your team डेफिनेटली is वो picking. अपने इसके लिए वॉन के Come लिए on, वॉन let's वॉन को roll. Your अगर team मिन is मिन सितार picking. बहुत प्रॉब्लम देगा अगर उसने अल्ट खोल लिया तो आई थिंक उसके बाद उनसे ही बैन किया है, बट ओह आई थिंक ये पहला गाड़ी है जो मैं अभी देख रही हूँ इतने टाइम के बाद। यहाँ Let's पर go. एक बात है कि थोड़ा एक हीरो है जो टूर्नामेंट पे लेते नहीं है लोग, पता नहीं मेटा पे है नहीं वो, तो मे बी उसी के साथ वो नहीं आ पा रहे, बट नाना है दो। अभी नाना और जॉनसन का कॉम्बो काफी अच्छा चल सकता है, बट नहीं थोड़ा बहुत मेज का ऑप्शन देखते हुए फारसा आ चुका है। यहाँ पर लूनोस भी ले रहे तो भी काफी अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि जो लाइट फॉर्म है वो इजीली हम डॉज कर सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता था। तो बट फारसा भी बैक लेन पे काफी ज्यादा डैमेज दे सकती है, अनलेस मतलब थोड़ा बहुत वो वुशन से भी बचना पड़ेगा। देखते हैं अर्ली गेम का स्नोबॉल कौन सी साइड पे जाएगा, क्योंकि एक साइड पे थोड़ा बहुत लेट गेम दिख रहा है, एक साइड पे काफी ज्यादा अच्छे से बर्स्ट दिख रहा है। सो मे बी और मे बी नॉट कुछ भी नतीजा हो सकता है दोनों के दोनों साइड से। अभी के लिए एक लास्ट पिक आ रहा है टीम यमदाक के हाथ से, देखते क्या लेंगे। चाओ ऑप्शन पे है, फोविस निकाला गया तो आई थिंक वो नहीं लेंगे, पर लाबू लाबू के अगेंस्ट आई थिंक मुझे एक ब्लू देखने का है, ब्लू या तो हिल्डा, ऐसा एक हीरो काफी अगर ले रहे हैं टीम When यमदाक a तो बहुत body इजीली हो suffers, जाएगा, बट नहीं the spirit बेनेडेटा blooms. अपनी खूबसूरत बेनेडेटा EXP लेनर आ चुकी है यहाँ पर, बट अभी थिंक बेनेडेटा को थोड़ा बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी क्लियर करती है इन कंपेयर टू लापो लापो। डेफिनेटली एक अपर हैंड होगा फॉर दी बेनेडेटा, बट अगेन थोड़ा बहुत स्टन वगैरह हुआ तो देखते हैं। एंड इसी के साथ हम जाएंगे थोड़ी देर पे लैंड ऑफ डॉन की तरफ। लैंड ऑफ डॉन पे ना अभी हमारे पास दोनों टीम आ चुकी है। क्या लगता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन सी टीम क्या जीतने वाली है? एक साइड पे कॉपी कैट वो होगी ब्लू साइड पे, एंड रेड साइड पे है टीम यमदाक। मुझे देखना है आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है, बट उसी के साथ थोड़ा बहुत अब अर्ली गेम के बारे में बात करें तो आई थिंक हाँ यमदाक के Welcome पास to ज्यादा ही Mobile Legends. ऑप्शन है अर्ली गेम का लेने का, 5 seconds till बट the चलो enemy देखते हैं reaches the गेम में, battlefield. गेम पे कुछ भी हो Smash सकता them. है। फारसा है, केलिया है, उनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, तो थोड़ा इजी टाइम तो नहीं देने वाले एनिमी को, बट लेट गेम कॉम्पोजिशन उसका ही थोड़ा बहुत डर है। बट इसी के साथ हम जाते हैं लैंड ऑफ डॉन। जंगलर जा रहे हैं अपने नॉर्मल रोटेशन के साथ, थोड़ा बहुत आई थिंक वायरसेस को इजी मिलेगा कि वो ले सकता है, बट क्या वो लीथो लेने चाहेंगे या नहीं? गुशिन के बारे में ना आई डोंट थिंक सो, आई थिंक लीथो होने वाला है, क्योंकि गुशिन थोड़ा बहुत अर्ली किल लेने के लिए सोच रहा है, बट आई थिंक उनसे वो हुआ नहीं। बॉट लेन पे फोकस आते हुए दोनों के दोनों टैंक्स काफी सपोर्टिव है, तो काफी एक अच्छी बात है कि दोनों के दोनों अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, बट उसी के साथ यहाँ पर वायरस को पता है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा कि अगर वो जा रहे हैं। इसी के साथ वायरस फर्स्ट किल, हाँ फर्स्ट ब्लड लेते हुए शानदार डैमेज, बट आई थिंक उसके साथ उनका चेस आने वाला है। फारसा है यहाँ पर, रेट्रिब्यूशन तो नहीं है तो आगे से ऑरेंज बफ ले जाती है ना, बट आई थिंक अभी ओवर एक्सटेंशन नहीं करते हुए आई थिंक उन्हें पीछे जाना पड़ेगा। एंड उसी के साथ थोड़ा बहुत हो रही है स्कर्मिश, बेनेडेटा आउट ऑफ द वे, बट नहीं पेट्रिफाई कॉम्बो के साथ बल मारते हुए क्या ही डैमेज।
बट वेट अ मिनट गुशियन अकेले यहाँ पर केलिया जंप करते हुए 3 जन से अगर वहाँ पर अल्ट रहता केलिया का तो काफी ज्यादा ही अच्छा सा हमें एक सेटअप देखने मिलता, बट नहीं, इट्स फाइन अभी के थोड़ा बहुत इजी जा रहे हैं। ओह, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑरेगी डैमेज देते हुए 3-4 स्कोर रे मिड लेन पे जाते हुए, बट नहीं, उन्हें ये जो जॉनसन लेके जाते हुए डबल किल फॉर सुपर केव। ये हमारा टैंक है या ये एक्सपी लेनर, थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है, बट अगेन इतना किल थोड़ा बहुत अगर अर्ली गेम पे ले रहे हैं तो इजीली बूस्ट मिल जाएगा आइटम्स, तो टोटल इजी होने वाला है। आई थिंक वाइस इज वहां पर वापस से टर्टल ले लेंगे अपने अकेले से, क्योंकि गुशियन थोड़ा स्ट्रगल कर पा रहे हैं उनका कॉम्बो के साथ और उनका डैमेज के साथ, तो थोड़ा डैमेज वगैरह तो मिड गेम पे ही आने वाला, तो आई थिंक थोड़ा स्लो खेलेंगे। पर उसी के साथ 1 मिनट फारसा इज ऑलरेडी यहाँ पर मर्फी जाते हैं टर्टल लेने के बाद, टर्टल के पास जाते हैं अपने जॉनसन के पास। जॉनसन खत्म होने के बाद आई थिंक बॉट लेन पे भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि 1-1 काफी लो है, काफी लो के मतलब कि एक शॉट और ये 1-1 जाते हुए अभी भी ओवर एक्शन करना चाहिए, बट मिड लेन पे किल्स लग रहे हैं, वो भी अपने डेटा थोड़ा बहुत ट्राई कर रही है, बट लेक्सी बैक लेन पे यही बात है कि वो इजीली बैक लेन में डाइव कर सकते हैं और अच्छे से स्टन कर सकते हैं, 2 जन को स्लो डाउन कर देते हैं, पर उसी के साथ डेमियन प्रिंस मार्क्समैन को लेते हुए मार्क्समैन भी मर जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा एयरटेल को, बट चलो कोई बात नहीं, अगर उसे किल तो मिल गया है, बड़ा सेंस है क्या ही डैमेज मिड लेन पे थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं अपने कॉम्बिनेशन के साथ, जो वो मिस कर रहे थे वो भी अर्ली गेम के साथ। अभी के अभी हम जैसे देख रहे हैं 3 मिनट गेम के अंदर दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। गोल्ड के नाम पे बात करें तो थोड़ा बहुत गोल्ड का डिफरेंस तो है, बट अर्ली गेम पे वो भी अर्ली 5 मिनट भी नहीं हुए, तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है कैसे टीम यमदा कैचअप करेगी। एक तो उन्होंने कंफर्ट हीरोज लिया है, तो कंफर्ट हीरोज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम आने वाली है बॉट लेन पे, काफ़ी बड़ा हादसा होने वाला है। दिन से निकाला गया वो भी बॉट लेन पे, थोड़ा बहुत डैमेज देना चाहते हैं, बट नहीं, ये जो स्टन जो है इजी गेम फॉर YSS, और एक जाते हुए डबल के लात पे क्या उन्हें ट्रिपल मिलेगा या नहीं, ट्राई तो कर रहे हैं। हाँ, ट्रिपल मिल चुका है, यही तो बात है YSS की, जो स्नो बॉल दिख रही है स्नो बॉल मिल चुकी है, स्नो बॉल के साथ बहुत ही इजी होने वाला है गेम, बट टीम यमदा रोकने के लिए काफी ज्यादा चांस है। मैंने आप तक देखा नहीं है ये जॉनसन को ड्राइव करते हुए, तो तो देखते हैं बॉटम लेन पे भी यहाँ पर अकेले YSS डैमेज देते हुए, बट गुशियन का कॉम्बो से थोड़ा दूर जाते हुए बच तो गए हैं, अल्ट मार दिए, बट आई थिंक अल्ट का कोई उपयोग नहीं होगा। बैक लाइन्स पे थोड़ा बहुत देख रहे हैं, वो भी लापू को कैपिटलाइज कर रहे हैं, एक किल अपना पैसिव के साथ रोक के डबल किल ले चुके हैं, ट्रिपल की तरफ बढ़ते हुए, बट आई थिंक वो नहीं जाने वाले हैं टैरेट के अंदर। YSS टाइम पे नहीं आ पा रहे, बट यहाँ पर लापू को जाना पड़ेगा, वो 2-1 सिचुएशन काफी अनफेयर था, बट क्या ही कर रहे, वो ज्यादा ही बीट थे, तो इसी के साथ ऑफ कैमरा किल्स में भी बहुत हो रहा है, ये इरेटर, ये बेंस्टर, एक में किल लग रही है, दूसरा रिवेंज पे तो डेफिनेटली ले रहा है। सो वो काफी एक अच्छा है, तो उसके साथ बेनेडेटा का भी जो स्नोबॉल है, जो किल ले रही है, वो भी सोलो आई थिंक काफी अच्छा जा रहा है उनके हाथ से भी। बड़ो वेट अ मिनट, मर्फी का शटडाउन किया जाएगा, वो भी कार के साथ फुल थ्रॉटल, काफी ज्यादा ही डैमेज था, अपनी केलिया उठा देती है, बट नहीं, बेनेडेटा क्या हो 1 मिनट पेट्रीफाई कॉम्बो मारते हुए यहाँ पर ट्राई कर रही है, काफी लो है, बर्न डैमेज तो लग रही है, बट नहीं, उतना नहीं है। ये पर रे आते हैं अपने के साथ, मार्क कर रहे जॉनसन को, बट बैक लाइन में हम देख रहे हैं एक छोटा सा चेज भी आ रहा है, बेनेडेटा आउट ऑफ द वे। आई थिंक उन्हें चेस करना चाहिए था वो भी गुशिन को, बट गुशिन का जो चेस था वो उन्होंने फारसा ने उठाया। आई थिंक थोड़ा बहुत इनहिबिटर के पास जा रहे, आई एम नॉट श्योर व्हाई वो थोड़ा उतना आगे जा रहे, बट एक मिनट रेक्सी का कॉन्फिडेंस देखो गाइस,
बहुत ही एज भी थोड़ा ओवर एक्सटेंड हो चुका है। लॉर्ड भी आई मीन टर्टल ये भी कार भी आ रहा है। कार ठोकने के बाद एंड ये बैकबुक भी ये क्या ठोकर खाए एंड वो ड्रिंक एंड ड्राइविंग का ये हो चुका है। बट एक मिनट डबल किल रे का बट नहीं वन वन अपना जो फर्स्ट किल लेते हुए एक मिनट वन वन किल थोड़ा बहुत तो फिर एयर स्ट्राइक आ रही है बट वो आउट ऑफ द रेंज है बड़ा नॉट एनी मोर। जो बर्स्ट था जो पैसिव का फारसा था वो मेक श्योर कि वो फारसा वन वन को उठा के ही लेके जाएगी। बट एक मिनट रे ना अभी थोड़ा बहुत इनका एक्स्ट्रा ये हो रहा है। 3 कॉपी कैट के एक मेंबर तो मर के जा रहे हैं बट जॉनसन का थोड़ा चेस कुछ कर नहीं पाए। बट ये चेस के साथ आ देंगे लास्ट टर्टल जो है टर्टल को लॉर्ड करवा देंगे क्योंकि 15 सेकंड बाकी है। अभी 15 सेकंड में कितना ही टर्टल लेके लेंगे क्योंकि वाईएसएस को फार्म अप हो चुका है। वाईएसएस को उतना फार्म चाहिए भी नहीं। अभी टीम को स्प्लिट कुछ कर देंगे बट स्पेशली फॉर टीम यामा कर थिंक उनको जल्दी से जल्दी काम फिर कुछ करना है। स्पेशली वेनेडेटा आई थिंक उसको जल्दी फिर कुछ करने का ऑप्शन है हाथ पे तो देख सकते हैं। मे भी बॉटम लेन पे बट नहीं वो नहीं जा रही है एज ऑफ नाउ। लॉर्ड का बुशेस सिक्योर करते हुए एक मिनट जंप करते हुए वन बट वो यूज करते हैं अपने प्यूरिफाई जो फ्यू प्यूरिफाई रहता है फ्री प्यूरिफाई अपने सेकंड स्किल पे शट डाउन हो चुके हैं वेनेडेटा और एक किल मिल चुका एक के ऊपर एक किल। लॉर्ड भी ये लॉर्ड नहीं मिनियंस भी आज आने के ट्राई कर रहे हैं। सो देखते हैं थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट है थोड़ा बहुत मस्ती तो कर रहे हैं टीम दोनों के दोनों। इसी के साथ देखते हैं लॉर्ड आ चुका है तो मतलब आई थिंक ये एक अच्छा टाइम होगा लॉर्ड लेने को। एंड इसी के साथ ये इरिथेल का जो चेस था आई थिंक इरिथेल को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि वो मार सकती थी बट नहीं वो कॉन्फिडेंस ओवर एस्टिमेट करवा दिए। फेरेडा स्ट्राइक था अपने जो बेरेटा का लाइफ निकालने के लिए बट आगे देखते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डैमेज आ रही है एज ऑफ नाउ। टॉप लेन की लेन जा रही है वाईएसएस लॉर्ड लेने को तैयार नहीं है बट वापस से टैरेट से आई थिंक गॉड लाइक टू पिकअप लाइक हर एक मेंबर के पास एक इतना डैमेज है तो आई थिंक वो इजी हो जाएगा। बट उसी के साथ वन आते हुए स्टैट्स नहीं मिली काफ़ी क्लोज कॉल था बट इसी के साथ नाना गायब। माय गॉड टीम कॉपी क्या ही कर रहे हैं एक के बाद एक जल्दी से वो कर रहे हैं कि उन्हें चाहिए लॉर्ड के पास बढ़ते हुए। तो आगे देखते हैं क्या होगा किसी लोग आइटम्स पर बात करते हैं। अभी जो आइटम्स दोनों के साइड से लिया जो है YSS is all farmed up 11 kills already. It's not even like 15 minutes in the game. अभी अगर वो 15 मिनट होता तो वो अलग बात है था। ये YSS ऐसे छोटी सा वो केस है नहीं यहाँ पर ओके एक मिनट अकेली जॉनसन के अगेंस्ट डैमेज तो दे रही है बट आई थिंक वो थोड़ा बहुत लो रहता था बट नहीं। वो नहीं देखने मिल रहा है फारसा नाना AFK है। नाना का कुछ नेट प्रॉब्लम लग रहा है। टॉप लेन में थोड़ा बहुत हमें देखने मिल रहा है बेरेटा काफी लो एंड ये होता है इरिथेल का इरिथेल और एक किल के लिए जाने सकती है बट नहीं वो YSS और Lucian डिलीट होते हुए लॉर्ड पहुंच गया है बट आई थिंक दैट इज द एंड एंड टीम कॉपी कैट हु विंस द मैच। चलो बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड के तरफ।
Okay, so here we are in another match of the day 4 knockout stage between Tamo Esports and Prime Syndicate. So now the banning phase has been started, and the first ban will be from the Tamo Esports. True love. So the first ban will be Carmilla, Banning. and it's a good ban. I would say like it's not a pretty meta ban, but still, it's the pick rate is very high. And now from the Prime Syndicate, we'll see one ban from their side as well. And I think they might ban some sustain or the Barca or something like long range for that one, because they are seeing that Carmilla has been banned, so they don't want that that cursed blood May the that blood ult. of my enemies flow And from my Minchita has been spear. banned, so I think they're looking for some dashes heroes They call from the me a Syndicate hero side. Okay, because so I saved YSS my has been nation banned, and from it's a falling pretty good apart. ban because YSS has been a menace in this particular season after getting that revamp that his skills. And now the another ban from the Syndicate side, and which will be, I guess, some sustain, like some EXP, like Yuzong Lapu or like CC or something. To me, Okay, so 1-1, fun okay. is all that matters. Not a bad ban, because 1 is pretty good in this particular meta, and then if you're a good 1-1 player, then you're gonna be destroying the whole battlefield. And from the Tamo esports side, we'll see another ban. What do you think it will be? Let's go. Okay, so Your Iritel. team is banning. So I think they might, I think they want to go for the Granger, I guess. That's why they're just directly banning the Iritel, because Iritel is a hard counter against the Granger. So, and now from the another ban from the Syndicate side. This one I can't predict because they're banning pretty random wise. Like it's not actually sustained. Already got him And lined okay, up so in my Kimi, so they don't want Your that team is Kimi's picking. long-lasting damage. Okay, so I think they want to go for some utility jungler or some like pretty tanky EXP, so that's why they don't want that Kimi damage. And from the Tamo side, the picking phase has been started. So now the first pick, we will be looking from the Tamo esports. And I guess we will see some Lancelot or Lapu. Okay, so Lapu, my guess was right, and then they locked in the Lapu, and now from the Syndicate side, Where we the will see light two bans, shines, two picks, flowers will which will be bloom. Lancelot, as I've predicted. Like they already banned the Minchitar, so now he can easily dash in and dash out. And Granger. So from the Tamo side, we saw that they banned Iritel, so the Syndicate, they just took it as advantage, and then they just directly picked the Granger. And for the Granger, we are seeing that from the blue side, like they want to go for the Moskov. And Moskov is like yeah, it's good against Granger as well. But after that, then it will be only like which player has the more skills. tells Okay, so Esme is pretty good, but you need a little bit of higher gold to actually dominate the whole game. So if you're in low that one, then it will be pretty tough. So I guess we will be seeing Esme jungle, I guess, and it's a pretty uncommon, but still it can work if you have the synergy and if you have the composition. So from the Syndicate side, we will see another picking, which will be their third pick, and I guess they might pick some EXP, because we also see that from the Tamo spot, we already saw that their EXP is already picked. So for the counter, they are looking for the Xbox through damage so that it can fight last long with that Lapu, because we know that Lapu is pretty good. Okay, so CC, they're looking for considering the CC as well, and then CC is pretty good against the Lapu. Okay, so they're locked in.
Okay, so now the banning phase has been started again. And we will see another ban from the Syndicate side. Which would be, I think, some till now, two roles have still been not picked, which are mid lane and roamer from the both sides. So they've banned Kufra and Grok. So Kufra for the lens and Grok, which is now came in the meta after that slow revamp of them. So now the last ban from the Syndicate side, what it would be? It might be some Farsa or Zetian, or they're looking for some, again, another roamer ban. What do you think it will be? For me, I guess it's Zetian or Farsa, like for the mid lane, because if Zetian is there, then it's pretty good in the team fight. You can just ult and everyone will be stunned and you can see the whole vision. So Zetian is my choice for the ban. Let's make Okay, the so whole Florin, they don't world want that healing. Okay, I guess I was wrong, but still, Florin is a pretty good pick. I mean, pretty good ban. Okay, so for healing, they don't want that Minotaur's healing and that crowd control. Okay, so now the picking phase has been started. Now we will see some roam pick or mid lane pick. What it would be? I guess Kalia, because they can just gank one guy and then one hero, and then they can burst down that one particular hero, and that after that they can do a lot of things, because it will be 4v5 after that. So okay, so Zuxin, they are looking for Zuxin and Cecilion. Okay, Zuxin is not that bad. It's pretty good pick, but it doesn't have that burst damage or that long lasting damage, but it's still pretty irritating in that team fight. You will just get thrown, and after that again you will keep on thrown away. So, and now another two picks we will see from the Tamo esports. By the way, guys, there are giveaways, and the giveaways are like 100 likes, and Starlight giveaway will be there. So if you guys want to be the winner, please just like and put down your comments that you like, and then put a comment that you have liked. And we are seeing that Fredrin utility jungler in the Tamo esports or Esme. So it's I think Esme is the mid lane in that this Tamo esports. They want that sustain and everything. So Moscow will be the only one who's gonna be the backline and the main core damage. And from the Syndicate side, we are seeing that Gato and Terisla, they're considering. Okay, so Tigreal is also in their picking list. So they're still indecisive for the roamer pick. Okay, so they have locked in the Tigreal. And as you can see, now the whole picking and banning phase has been gone, and after some minutes we'll go into the Land of Dawn. And by looking at their team composition, for me, Syndicate has a better composition, but still, in that Tamo esports, if the Moscow is a pretty good player, then that they can work it out this particular composition, like Esme mid and utility jungler with that Lapu. So it's a pretty random draft, but still we don't know their synergy. So as in the last couple of matches, we saw that synergy can beat the composition. So who knows? Let's find out in the match. So after some seconds, the match will start. So stay tuned. Welcome to Mobile Legends!
Okay, guys, welcome to the Land of Dawn, and the match has been started. You can see from the Tamo esports, they have a little bit of experimented team composition, and this particular draft is pretty unlikely in a normal game. Like, you don't see Esme mid lane that much. Like, sometimes you'll see, but it's not pretty common. Other than this one, Syndicate, they have a like strong pick with the Lancelot and Ranger and the CC. So both the junglers have started their buff from the EXP side, and then the Lito is spawned in the gold side. So there have been no contest for the Lito, and we can see that Lapu is being pretty irritating to both the Zuxin and the Lancelot, and he made Zuxin half HP with that half laning, and you can see some skirmishes in the bot lane. So I will have him caught, and okay, so he'll be safe. You see, it's a pretty tanky hero, and Esme doesn't have that much damage. So I think we will see we are seeing today. I think Esme will be the damage one, not the sustain. And Angela is in the bot lane, giving that vision, but the Syndicate, they are looking for the EXP, and we can see that 4 men are going against in the EXP, and now Lapu, he will be safe. Okay, Esme has also rotated, and okay, Esme has been caught, and okay, he will be safe. And now the turtle is spawned, and the turtle contest, but Fredrin is still on its way to reach there. Is so far from the turtle, so can they take it for free? Okay, Lancelot is pretty low, and Lapu has been gone, and the Lapu can take. Okay, so pretty good synergy from the Lapu and Esme, and they have picked off Lancelot. And Esme is still going on, and can he take down another kill? No, he can't. And Turtle was taken by Fredrin from the Tamo esports. Okay, so they are being able to work it out with this composition. They are being able to do it, and Lancelot. Okay, so no invasion will be there for now. And we can see that Lapu offlaning is so good that he's already in the goal lane. But okay, so now their communication is pretty good, I guess, because Esme is in the EXP and Lapu can easily rotate well, and he can easily get the stuns and everything because he's pretty tanky. And okay, so till now only Lancelot has been died, and another heroes, they're all pretty healthy for now. And in the bot lane, I think Moscow is getting a little bit pressure. No, he's not getting pressurized, but he's playing very passive. It's good that because the enemies, the syndicates, they all already ganked up there, but they won't charge in. And now they're going for the mid lane. Okay, so Esme will be safe. They're still being very passive with that charging, engaging, and they want a little bit of farm, and after that there's a little bit of damage, then they will go in, I think. So okay, so some exchanges are in the goal lane, and Moscow was almost dead, but Angela is there for the healing, so he won't die that easily. Angela has the ult as well. Okay, so now we are not seeing any more team fights till now. They're playing very passive on the both sides. They're not engaging. And okay, so Tigreal is getting a little bit of pressure, and he's in a very and he outed Ken. Okay, so nice set by Tigreal, but Ken, Esme survived, and okay, so Tigreal is safe, and Esme is already also safe. Okay, so the third contest has been started. So now, which team will be able to take this turtle? Okay, so good zoning out by Lapu, and Esme is the one taken, and Zuxin is also taken down by Lapu, and then Turtle will be taken by Esmeralda. So we are seeing that Lens is having pretty rough time against this particular composition, like because everyone can zone him out. Esme is also tanky, and then
Lapu is also there, and the 4-man against we are seeing that in the top lane, and CC will be dead. So I think giving Lapu to the Tamo Esports was a very bad idea for the syndicates. They shouldn't have given the Lapu, because Lapu in good hands is pretty scary. You know, like he's pretty good in this particular meta as well, and then the new patch has buffed him up so much. That's why. And Esme went in for the Zuxin. Okay, so Zuxin will get away. He can easily escape with her ult. And in the gold lane, we are seeing that 1v1. Okay, so Angela ulted, and Granger will disengage with that flicker. Because Angela and Moscow combo will be pretty harsh. So I think that Esme is going so freely, like no one can give any damage to this Esme, because he's too tanky and he's sustaining a lot. And the Tiger, he wants to do something, but he can't do anything because they're too tanky and they don't have enough damage to take them down. So they have to wait for the Granger damage, and after that they might be able to burst down some Esme or Lapu. But if the Moscow has the gold and items, and it will be pretty tough, because he can take down anyone with that damage. And CC is getting ganked again, so Lapu and Esme both went in. Can it be the kill? And they took down. So okay, so and then 5 men are there, and they're trying to take down both of them, and Esme has been died. Okay, so now Lapu still surviving. He's still sustaining a lot with that Angela ult, and Fredrin went in as well. Fredrin will be taken down, and Lancelot was almost dead, but they couldn't take him down. And Moscow, we can see that in the gold lane, Moscow is pushing a lot with the split push, and it's a pretty good thing for the Tamo Esports. But Prime Syndicates, they are winning the team fight with the Granger, because Granger has the only one who can take them down. Without him, they couldn't. And in that, we are seeing that Lapu is sustaining a lot, and he's about almost. Okay, it's a good play by Lapu. Okay, and they took down Zuxin as well. Okay, so Lapu is doing pretty well in this particular match. So Tyrell is also in a very this position, and he's almost dead. Yeah, he's dead. Moscow's first kill has been gone, and Moscow got the first kill, and he has the most gold in the whole. No, okay, so Granger has the most gold. Okay, so the gold lead is from the Tamo Esports, but Moscow is still losing gold in the comparing to the Granger. Red team turret has been destroyed. Okay, so now in the turret wise, Tamo Esports are winning a lot, and Prime Syndicate, they have to do something about this particular thing. They need to push, or they need to win the team fight, or they need to take the objectives. They need to do something. They need to do that miracle play. If not, then it will be an easy game for the Tamo Esports, because they are already winning the team fight and they are taking the objectives as well easily. So now we are seeing that Esmeralda is about to be dead, but Angela will ult, but still it won't be enough to sustain that damage from the Ranger. Okay, so Fredin is also in a very crucial position, and can they take the no? Okay, so CC tried, but they can. And Lapu came in. He won't engage because the four men are there, and I don't know why Tyrell recalled, and I think Tyrell is having some network issues with that one. He's just staying in that base. Okay, so now we are seeing that there are no team fights for now. They want to play safe, because now the Tamo Esports are also considering the damage from the Granger. They can't underestimate the damage from the Granger, because he has a lot of damage. And he already got a Sky Piercer, so if that one is okay, so 1v1 we are seeing that in Lapu versus this one Granger. Can he take down Granger? Okay, so very good outplay by Granger. Can he run away from the Lapu? He's a strong beast. And Esme is also from the backside. There is no way for the Granger to run away. He tried, but he couldn't. So good play by Granger and Esme. And we're seeing that Moscow is still pushing. He's still doing the split push, while his teams are busy distracting the
Prime Syndicate, and after that, there is no particular clash, like team clash between these two teams. So now that they are going for the Lord, so Yeah. we won't. I don't think. Okay, Peachy, are you there? Yes, yes, I'm back. Okay. Okay. So we are. Oh, this time around, the Fredrin has taken away the Lord for himself. But let's Yeah. see, let's see. Fredrin के पास एक chance है वो अपना एंजेला के साथ, तो आई थिंक वो एडवांटेज उनके काफ़ी हाथ पे जा रहा है काफ़ी अच्छे से। यहाँ पर उनके और जो ओपोनेंट्स टीम है तो उनको थोड़ा बहुत चाहिए था कि फ्रेडरिन को इजीली मेल डाउन करे, बट वो बात नहीं है। एंड इसी के साथ फिर लॉर्ड बढ़ती हुई बॉटम लेन से क्या हमें देखने मिलेगा कि ये एंड हो सकते हैं, नहीं तो वो वन साइड गेम लग रहा है क्योंकि एक साइड पे भी हमें थोड़ा ज़्यादा ही गलती है, बट ऐसा मौका नहीं मिला है। इसी साथ एस्मेराल्डा भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रही है, एस्मेराल्डा फ्रेडरिन एंड बस मॉस्को आ रहे पीछे से जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए। एंड इसी के साथ एंड तो नहीं होने वाला है, बट कम बैक पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो भी टीम रेड के साइड जो टीम रेड पे है। बट देखते होता है नए कम बैक है जाती है एस्मेराल्डा प्रॉब्लम से बैक डैमेज हो सकते, बट उसी के साथ मिनियन भी क्लियर हो जाएगा। Okay. वो जो टिग्रियल जो है ना, उन्हें एक पोटेंशियल है ज़्यादा से ज़्यादा ये एक अच्छा ये देने को, सेट देने को, पर हमें वो ऊपर देखने नहीं मिल रहा है। Red team hero has been slain. तो ये अच्छा टीम फाइट देखने को मिल रहा है हमें, और ये लेंस को गिराते हुए उसके बाद लापू बहुत स्ट्रॉन्ग ये गेम पे बहुत अच्छे तरह से खेल रहा है। वो फिर से वो और किल पिक ऑफ करने की ट्राई किया था, बट ओके सुन ब्यूटीफुल सेट बाय टाइग्रिल। ओ गेम दे मेक इट अ कमबैक प्ले। ओके सुन ब्यूटीफुल मिरेकल प्ले बाय टाइग्रिल, बट स्टिल वो इन लोग ने सब निकल जाएंगे, और बट फ्रेडरिन को इन लोग किल पिक ऑफ कर लिए हैं, बट स्टिल अदर्स दे विल बी सेफ। यही तो बात है मैं जो कब से बोल रही हूँ कि वन टिग्रियल है, अगर ऐसे ही सेट हो जाए और थोड़ा चाहिए था उन्हें तो इजीली सेट दे सकते थे, बड़ा थे। इसी के साथ लैंस लॉर्ड शिंग करते हुए यहाँ पर है लापू तैयार है गैंग करने के लिए, बट हमारे जो एंजेला है तो कूल डाउन किए हैं। इसके साथ फाइट देखते हुए ब्लू बॉक्स कंटेस्ट किया जाएगा, रिट्रीब्यूशन टाइप में मार दिया गया है। अभी लॉर्ड लेने के टाइम थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ेगा। हाँ, और इससे पहले हम आप आने से पहले देख रहे थे कि टाइग्रिल थोड़ा सा उसका नेटवर्क इश्यूज कुछ हो रहा था, वो बेस पे कुछ 1-2 मिनट्स के लिए बेस पे ही वो रह रहा था। देन उस समय में थोड़ा सा प्राइम सिंडिकेट के लिए बहुत तकलीफ सिचुएशन था, एंड देन नाउ आई थिंक दे कैन रिकवर। आई थिंक द टाइग्रिल नेट इज प्रीटी ओके राइट नाउ, एंड ही जस्ट शोड अस ब्यूटीफुल सेट। सो आपको क्या लगता है कि कमबैक का कुछ वो है? डेफिनेटली है, क्योंकि जैसे हम देख रहे ग्रेंजर है, ग्रेंजर के साथ सूशन भी है, तो सेट के नाम पे तो सेट्स डेफिनेटली उनके पास है। पर एक बात है कि थोड़ा ज़्यादा ही डिपेंडेंट है वो टिग्रियल के ऊपर, तो इसके बाद लॉर्ड ले चुके हैं जो टीम ब्लू साइड पे। लॉर्ड के साथ आई थिंक अभी थोड़ा बहुत फाइनल पुश लग तो रहा है, अनलेस सक्सेसफुल डिफेंस कर पाएंगे। सक्सेसफुल डिफेंस का सबसे ज़्यादा हाई ऑप्शन है, क्योंकि इनहिबिटर्स अभी भी खड़े हुए, तो इनहिबिटर्स थोड़ा बहुत आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। सो अभी के लिए लेंस लो ट्राई किया थोड़ा मिनियन को थोड़ा सा वो करने के लिए, थोड़ा डिस्टेंस बना सकने के लिए कि लॉर्ड थोड़ा सा लेट से आ जाए, सो दैट कि दे कैन क्लियर अदर लेन्स, और उसके बाद सब लेन से प्रेशर नहीं आने के लिए। सो दे आर ट्राइंग समथिंग बट इट्स नॉट एक्चुअली वर्किंग। सो अभी उन लोग करना पड़ेगा वापस मिरेकल प्ले दैट जस्ट टाइग्रिल हम लोग को दिखाए थे कि वो एक सुंदर सेट बना, ब्यूटीफुल सेट बना के दिखाए थे। अभी वैसे ही कुछ एक मिरेकल प्ले देखने को मिल सकता है।
तो डेफिनेटली लूशियन ने तो एक तरफ से डैमेज दे रही है और यहाँ पर हमारे हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन पुल हो रहा है। एस्मेराल्डा काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज खा रही है, 5 मेंबर से दे रही है, बट हैंड चलाती है रेस्क्यू के लिए। लॉर्ड मर चुका है लॉर्ड, लाइक उन्होंने ब्रेक लगाने नहीं किया, तो मतलब हाँ थोड़ा बहुत सक्सेसफुल डिफेंड है। अभी मिड लेन में अगर सेफ हो तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर यहाँ पर ये एक छोटा सा डैमेज देना चाहता है कि वो मिनियंस बाहर जाए। एंड इसी के साथ अनदर सक्सेसफुल डिफेंस। क्या लगता है क्या होगा? अभी तो कहने का बहुत मुश्किल है, बट तो लग रहा है कि कमबैक आएगा, क्योंकि ग्रेंजर को वो जो डैमेज चाहिए था वो धीरे धीरे आ रहा है। वो उसके पास अभी फुल आइटम आ गया है और वो नरक की क्रॉड है, वो तो सबको पेनिट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हंटर स्ट्राइक भी उसके पास है, बट के स्काई पियर्सर में वो जो स्टैक्स इतना हाई नहीं है, तो वो हाई होता तो तब तो कमबैक का श्योर हो सकता था। बट अभी कहने को मुश्किल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वो तामो स्पोर्ट्स ब्लू टीम की तरफ से बहुत अच्छे से उन लोग जो हैंडल कर रहे हैं सब चीज को, अभी पैसिवली ले रहे हैं, उन लोग ज्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करते करते लॉर्ड एक समय में तो वो लोग शायद से कुछ पुशिंग करके तब ले सकते हैं, क्योंकि मॉस्को तो और ये ग्रेंजर को कुछ तकलीफ मिलते हुए, और ये ग्रेंजर को क्या हो और ये ग्रेंजर फंसते हुए बहुत ही आगे निकल गए थे ग्रेंजर। तो अभी तो मुश्किल है। देखते हैं ग्रेंजर आउट ऑफ द वे। थोड़ा बहुत मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि ग्रेंजर जो है थोड़ा बहुत मेन डैमेज डीलर थे, बट उसी के साथ लॉर्ड आ गया है। ये तो तीसरा लॉर्ड होगा। ये लॉर्ड के साथ आई थिंक थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा कि वो वो क्रिस्टल अपने जो बेस की तरफ पहुंच जाए। तो देखते हैं क्या होगा। क्या लैंसलॉट ले सकते हैं लॉर्ड? लेने के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा पहले से देखे थे हम लोग कि वो जो एक दो और मॉस्को उसको पकड़ते हुए क्या बोले कि ये तो, और ये सुंदर प्लस स्किन देखते हुए लेंसलॉट की तरफ से वाओ बाप रे क्या ही कंटेस्ट किया यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग कुछ करना चाहते हैं। ऐसे नहीं आउट है, लॉर्ड उनके हाथ पे है, मिड लेन पे काफी ज्यादा डैमेज आई थिंक ये कमबैक का ही पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं। एक के ऊपर एक पर डैमेज मारते हुए ट्रिपल किल ग्रेंजर के लिए। थोड़ा बहुत मीनियन आई थिंक जाना चाहते हैं, देखते हैं अगर उन्हें मीनियन मिलेगा या नहीं। बट फ्रंट लाइन पे एस्मेराल्डा भी डैमेज दे रही है, लॉर्ड भी डैमेज दे रहा है, मिनियंस भी आ रहे हैं, बट वो मिनियन का टाइम चला गया एंड वो एक किल आ गया है। बट वो चलो मिनियन गिन ही लेते, क्योंकि ग्रेंजर काफी हद से ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। ओके सो अभी एस्मेराल्डा अकेला है, क्या वो डिफेंड कर पाएंगे? इसको फुल फोर्स से आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सिंडिकेट फुल फोर्स से ट्राई कर रहे हैं कि वो ये गेम को जल्दी से जल्दी एंड कर सकेंगे, क्योंकि लेट गेम में तो टफ होना था, क्योंकि ग्रेंजर है और उसके बाद लैंसलॉट का भी डैमेज आ जाएगा जो ट्रू डैमेज वो देता है। उसके बाद उसके पैसिव से तो बहुत डैमेज लगेगा, बट हम देख रहे हैं कि ग्रेंजर का बहुत डैमेज लग रहा है, और जो कि बहुत अच्छा है ये प्राइम सिंडिकेट के लिए। उससे पहले उन लोग टीम फाइट में बहुत डोमिनेशन खा रहे थे, क्योंकि ये लोग सस्टेन है प्लस डैमेज ये ब्लू टीम की तरफ से हम देख रहे थे। तो अभी उन लोग लेन को अच्छी तरह से मेंटेन कर चुके हैं, बोथ साइड से मिनियंस जा रहे हैं उन लोग के बाद। अभी थोड़ा प्रेशर आ रहा है ये तामो ई स्पोर्ट्स के लिए प्राइम सिंडिकेट की तरफ से। देखते हैं, अभी तो थोड़ा बहुत टाइम है दोनों की तरफ से। थोड़ा बहुत इनहिबिटर्स अभी भी खड़े हैं, तो थोड़ा बहुत लेन प्रेशर अगर ऐसे बनाते जा रहे हैं। बॉट लेन पे हम देख रहे हैं कि लेन प्रेशर बनते ही गया है, तो यही लेन प्रेशर के साथ आई थिंक बहुत इजीली वो लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं। जो लास्ट स्लॉट का जो लॉर्ड उन्होंने किया वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे तरह से उन्होंने किया है कि पूरी टीम को वो एडवांटेज मिले। बट ये एडवांटेज के साथ देखते हैं अगर वो वापस से और एक लॉर्ड ले सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो लास्ट लॉर्ड हम देखने वाले हैं काफ़ी मायने रखेगा। फोर्थ लॉर्ड, अब ये लॉर्ड अब पूरी गेम बताएगा कि कौन जीतेगा और ये कौन हारेगा। हाँ, और वैसे अभी 19 मिनट्स हो गए, सो अभी फुल लेट गेम पहुंच गए, और अभी इस पे लापू का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि लापू तो अर्ली गेम है, हीरो है, सो इसके लिए लेट गेम में उसको थोड़ा तकलीफ होगा ग्रेंजर के अगेंस्ट पे, क्योंकि वो उसको बहुत डैमेज देंगे। अभी उसके साथ लापू को सस्टेन भी जाना पड़ेगा, उसके पास इतना डैमेज भी नहीं जा सकते वो तो फुल बस 2 डैमेज आइटम के साथ ये कमबैक का बहुत चांसेस है अभी।
और बट हम देख रहे हैं कि लैंसलॉट अपना पोटेंशियल को अपना लूज कर रहे हैं। लैंसलॉट का पोटेंशियल बहुत हाई है बट वो अपना उसको इस्तेमाल नहीं कर सक रहे हैं अभी बस। बट हमने देखा कि वो रिट्रीट तो अच्छा दे रहे हैं बट हीरो पोटेंशियल उन्होंने शो नहीं कर पा रहे हैं वो। सो मॉस्को की तरफ से हम लोग स्प्लिट पुश देख रहे हैं धीरे धीरे और उसके साथ टीम फाइट भी शुरू होने वाला है और ये लोड कंटेस्ट होते हुए उसके ओके सो सीसी चला जाएंगे डिफेंड करने के लिए। अभी लैंसलॉट फिर से ट्राई करते हुए वो पीछे सबके किसी ने उसको नोटिस नहीं किया अभी तक। उसके बाद क्या वो लॉर्ड स्टील कर सकेंगे इसको और देख रहे हैं कि हम सिंडिकेट वापस बैक कर चुके हैं तो लॉर्ड वो लोग लॉर्ड को छोड़ के गए डिफेंड करने में हाँ। काफ़ी अच्छी बात है बट यहाँ पर लैंसलॉट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि दे आर वेरी अवेयर कि लैंसलॉट को अंदर नहीं आने देना है। लॉर्ड भी ज़्यादा डैमेज दे रहा है एंड लॉर्ड तो ऐसी भी डैमेज देता है। यहाँ पर लैंसलॉट क्रैश करते हुए नहीं उन्हें तो नहीं मिला बट एक मिनट दोनों के दोनों टीम ने छोड़ दिया है लॉर्ड का। थोड़ा बहुत हमें देखने मिल रहा है तो एंगेज बट कोड जो अपने जो पेंटर है ये लॉर्ड जाता है बैटमैन के हाथ पे वाव। से बट मॉस्को मिड लेन पे स्प्लिट पुश कर रहे हैं। क्या नतीजा होगा उन्हें रोकना पड़ेगा कोई बड़ी यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे टिग्रियल है थोड़ा बहुत डैश एंड ये विंड ऑफ नेचर की वजह से मॉस्को पहुंचाते हैं बट वेंजेंस का डैमेज क्या ही हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। थोड़ा सा और डैमेज ये गया है गॉड लाइक रेंजर के हाथ में। ओके और अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है दोनों टीम की तरफ से बट अभी लग रहा है कि लेट गेम आ रहा है तो सो प्राइम सिंडिकेट अपना जादू दिखा रहे हैं और उसके साथ हम देख रहे हैं कि बहुत तकलीफ हो रही है टीम तामो ई स्पोर्ट्स के लिए और इसमें बहुत सस्टेन कर रहा था बट स्टिल विद एंजेला क्या वो सस्टेन कर पाएंगे नहीं हो रेंजर का डैमेज बहुत हाई है और बस काम हो जाएंगे। क्या ये एंड होगा? दिखता है ये डेफिनेटली एंड है। ये लॉर्ड का एचपी काफी ज्यादा है एंड इसके साथ पूरी टीम बेस को मार्क करते हुए ये हो गया है टीम रेड साइड की जीत। टीम तामो ई स्पोर्ट्स ने गलती कर दी कि उन लोग अर्ली गेम को डोमिनेट करते बट वो लोग ने एंड नहीं किया समय पर सो ग्रेंजर को डैमेज आ चुका था उसके बाद खत्म। सो अच्छा मैच देखने को मिला हमें एंड इसके साथ हम लोग ब्रेक लेंगे तो स्टे ट्यून गाइस।
so let's go to another match. And ये मैच Benster versus TK भाई का वो है. Thorns remain. So first बैन हम लोग देखने को मिलेगा वो है लैंसलॉट, जो कि अच्छा बैन है, क्योंकि अभी हम देखे तो जस्ट इससे पहले का मैच में हम देख रहे थे कि लैंसलॉट ने देश मार के 2 बार लॉट चुरा के चला गया, क्लच स्टील दिखा के हमें उसके बाद मैच जीत गए उससे. एंड सो टीके भाई की तरफ से हम लोग देखेंगे एक बार फर्स्ट बैन. सो ये बैन क्या हो सकता है, क्या ये सस्टेन हो सकता है या फिर कुछ सपोर्ट. Okay, so Alucard. So Alucard is pretty good in this meta particularly, and they don't want that heat from that Alucard. That's why they are just banning it, and it's a pretty good thing for them. और फिर हम लोग को अभी सेकंड बैन देखने को मिलेगा, जो कि बेंस्टर की तरफ से होगा. And this ban, what it will be? It might be YSS, it might be Lapu, and it might be Florin or some other sustain heroes. This land is our So as I've said, it's Lapu and pretty good ban because हम लोग देखे थे कि अर्ली गेम पे लापू फुल डोमिनेशन दे रहे थे पूरा फुल मैच में. Your तो team इसकी वजह से लापू बैन हो चुका है और यूरेनस भी बैन चुका है. तो यूरेनस भी ये मेटा पे बहुत अच्छा है और Save my nation from इतना falling. बैनिंग और पिकिंग हम लोग देखा नहीं था, इतना पिकिंग रेट और बैनिंग रेट देखा नहीं. बट स्टिल आई थिंक दे डोंट वांट दैट too much sustain from that Uranus और YSS बैन होते हुए. तो YS का बैनिंग उसको लोगों को नहीं चाहिए, वो डैमेज लेट गेम पे. बाय द वे पीची है. We are glue. your team is preparing mischief. Okay, so now glue has been banned as well. Okay, so glue is pretty good, and they don't want the sticky hands of that glue. So now the picking phase has been started. Bro. And by the way, guys, 100 likes पे giveaway होगा, so Starlight giveaway होगा, so you might be that winner. तो इस सीजन के Starlight के लिए अगर आपको फ्री में Starlight का वो चाहिए तो सो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कुछ कि आपने लाइक कर दिया है. सो आप क्या पता आप विनर बन सकते हैं. एंड टीम फर्स्ट पिक हो गया है ये ब्लू टीम की तरफ से, बेंस्टर की तरफ से. एंड टीके बाई की तरफ से अभी हम लोग देखेंगे 2 पिकिंग. सो व्हाट पिक इट विल बी नाउ, इट्स वी कैन सी दैट इट्स Yves and the another pick will be, I guess it might be some EXP because they want to hide that hyper pick and roamer pick, because if they saw the roamer pick then they will pick the counters of that particular roamer. Okay, so Grok has been picked. That revamp Grok. Okay, so Grok EXP we will be seeing, and Franco Rome. Yep, it's been such a long time that we haven't looked at the Franco, but this game around, the hook's going to be spectacular, making sure that they will be, getting hooked, but at the same time to stop wipe out all the injustice in the world. Franco, they have gone in with a Chow, very understandable pick. They kind of wanted to have a very quick stun to actually stop the bloody hunt, but along with that, you do want to have enough damage. To back up with the damage, you are looking at a Yuzhong. That's a good sign, but let's see though, now that, as you have already mentioned, that, they want to hide the Roma pick. I think that is the case right here. The maze will be coming in motion. Yeah, and yesterday we saw one match where they picked Franco and they somehow won with that because the Franco, he only missed around like 3 hooks. After that, every hook he just landed. Somehow he was able to land every hooks almost every hook. Like only 3 hooks were missed. So if you see the same
hooks from this match, then it will be tough for the Aren't you Benster. gonna ask a lady to dance? Your Oh team my is god, banning. that's going to be such a very good match that if we were able to see the same thing again. But on the same note, Esmeralda is not going to be a mage, but an Esmeralda. I like the Esmeralda pick. Last game, the Esmeralda did struggle. The whole game was theirs, but just, a small mistake really costed them the whole match. But with that, as you guys already know, this is going to be the knockout round. So knockout round means that one team has to go home, and today I've let's been see waiting which for too team that long. will be back again to the drafting phase. Carry is out of the way. Along with the carry, you might be looking at a something like a Moscow as well. Now that both the teams, they do need a marksman. Okay, Pain so is the now proof they're that banning I'm the still Brody as well. alive. Okay, so like they don't want the burst damage from the Brody. I think they will go for like Iritel, or I guess. Okay, so they Your banned team Iritel. is They knew that banning. they banned Brody, so Iritel might be coming because Brody is a hard counter for the Iritel, and I think they might ban now Granger because they already banned the hard counter for the Granger Iritel, and they might ban now Granger. So what do you think? The last ban. Oh, the Sanjo. last Your ban. team Oh, is they went it picking. very quickly with that before I could actually guess. But Yeah. Hayabusa, understandable. Like they did went in for a jungle ban, but again, jungle ban though was expecting something like a Fredrin, something like a Fredrin to get banned, but that's not the case. We are looking at a 1-1, possibly might be picked up now. 1-1 does have the potential right here, like you could pick it up, but this Yuzhong is going to be quite annoying, and if this is a very experienced EXP player, that's going to be a lot of problem with that. Let's see though, are they going to block it in? Just few seconds left. What do you think, coach? I think it will be locked in because 1-1 is pretty good in this particular. Yeah, it's Fun locked is all in. that matters. Let's go. Let's go. No, I like the 1-1 pick. I do like the 1-1 pick though, but going to be facing a little bit problem from the uh, Chow, definitely, because Chow is going to be the tank. You're talking about how Yu Zhong will be on the EXP. Now there's going to be quite a damage being spread around. Now they need a marksman. They need a jungle. For the jungle options, I feel like something like a Fredrin or even an Expo might work very well on their favor. But what are we looking at? Is it going to be a Clint against a 1-1? What do you I think see about that, lots coach? of prey. Clint against 1-1. It's a Chivalry good is thing if we dead. can handle I like will if we revive can it. uh, able to connect those skills of the Clint, because it's pretty damage, and then without even getting that passive activated for that 1-1, he can just burst her down. So if her ult doesn't activate, she can easily just have to be like, it will be around like which one has the more skills. Okay, definitely. So let's see. The draft is here. The other side is still deciding on what jungler to go ahead. The Ling is a good option. The Joy is definitely another good option. Can Fame, the a back lane, flashy but accompaniment. could be a little bit problem against the Roger. So they do go with the Ling. Now the Ling does have a chance to go to the backlinks very quickly. Just make sure that to pick up the crumbs, but and also has the potential to immune those kicks. That has the potential to immune those damage as well. So let's see both the sides, they do have enough tankiness. Both the sides, they do have enough. But wait a minute, I do see Esmeralda mid lane. I feel like it's going to be a Esme on the mid lane. What do you think about that, coach? Yeah, it will be Esme on mid. But just now we saw that Esme on mid was good for the early game, but the late game they were getting dominated by the Grangers. But in this one there is no Granger, but it's Clint. So Clint has a little bit of like burst damage, but he doesn't have that much capability like just like the Granger. So I think it might work, but who knows? Like in the late game, but Yuzong is also there and Roger is also there. So
But that Roger pick is a little bit. I have a doubt about this Roger pick. Oh, Welcome Roger to Jungle. Mobile Legends. Yeah, it's Roger Jungle. Yep, it's going to be a 5 little bit of a seconds till problem the into the enemy early reaches the game. He would be battlefield. really, Smash them. needing to rely on his teammates a lot. So let's see if he's able to get it on track very early or not. One thing about Roger Jungle is he needs a little bit of a snowball. With that, ladies and gentlemen, let me welcome you to the land of dawn. Here we are looking at another match. So let's see which team wins it up and moves towards the round number 2. It's still the knockout rounds, and why is the Franco not annoying enough? Come on, man, I thought he would be going to hook those buffs. Yeah, even me, I was thinking of that one. But if he hooked that 4 men was there, he might get punished for that one. And we saw one hook is missed to that Clint. So now I'm having a doubt about this Franco pick. Oh. Let's see though. It's still not too late as of now. But on to the other hand, mid lane pressure is high. Esmeralda mid lane, wasn't expecting it. Yes, Esmeralda does deals magic damage, could be played, but it's not kind of viable given the fact that it's just how the Esmeralda moves around. But wait a minute, Clint all alone. There comes a little backup right there. This Zushin doesn't have as much as mana. The mana problem is really showing through. Yeah, but still, like Zuxin, like he can just she can just gain that mana if if it's lost, just for like just need to wait for 3 seconds like that, Yep. and then after that the mana will be full again. So not a pretty bad thing for that one. But now we will be seeing the turtle contest. So I feel like the Ling might take that one. For me, I'm just guessing. Oh, he does have chance though. Let's see. Roger Okay, so and good. coming in. With Yeah. that, members are there. Chow is all alone. There's like 4 members coming in. A little bit of damage, but the first one will be taken down. That would be the Ling, and they are moving forward. Black Dragon Form is there, trying to go towards the battle, but they're not able to. But he's marking down the Esmeralda, taking the skill. Bloody hunt for this Inuza, and yes, he will be taken down. The next chopping block might be this Yuzong. He's getting hooked and he's getting damaged on, and yes, Silence Squirrel will be taking the kill. And there's a little bit of a redemption coming here, but looks like they have taken a lot of advantage on their hands. Yeah, and I just saw that this Franco is able to hook. He hooked 2 times. Like first Zuxin, he just zoned out the Zuxin after hooking that one, but Zuxin just escaped because of that sprint. And now he hooked again that Yu Zong, and because of that one he died. And now you might see another hook by this Franco. So the match is between Benster and the Teak Have Bai. Yeah. I don't know what kind of what kind of name is that, but still it's just a good name. Definitely. Oh, hook! No, nice one. Looks like we are looking at the Zushin getting down, and that was the first kill for the Zushin. And surprisingly, did you see Zushin's name? Yeah, it's Benster having Benster, man. Oh, but Yeah. wait a minute. Top lane, there's a lot of pressure coming down for this Link, looking quite low, and he will be bursting now. Killing spree picked up by Link. Link does look quite low, but I think him just taking down those little minions might recharge him back up, but no, he's not going for the same. He just wants to make sure to get in for the turtle at the right time. and you're seeing a little bit of skirmishes of fight, and which one will be taken down? Like both teams are still holding on, and no one died by till now. But we are seeing this Franco hooks. He just hooked Roger, so that Roger now had to heal himself in the base, and Ling will be taking the red turtle, and it will be, I think, 3 turtle for him. Okay, so Esmeralda took the turtle. I think it's a strategy that Ling is giving turtle to the Esmeralda. He did retrieve, but still Esmeralda took it, so I guess it might be some strategy. Maybe.
Maybe I do wanna, I wanna try this strategy as well, giving the mate the turtle. But as of now, mid lane pressure is high. This top lane pressure is low. So I do want to see what kind of bloody hand is going to come in for this Clint. Clint is just cornered out from two sides. Oh, there comes the suppression for this Clint. Getting busted down there 4-5-6 with the first take. His first one. Blue team He turret was has in been town. destroyed. Now, Clint is not able to hold his lane. There's just so much pressure. What are they going to do? Team Benster, they have to actually come up with a solution, because if they keep the Franco unchecked, it's going to be such a problem. Now, they are coming up with a patch in the top lane, but wait a minute, there's no kick as of now. Legion trying to go back, but suppression will be here. He just get kicked on his turrets. He's taken down, and knockup coming in for this Roger, who will be taken down by this turret. Double kill picked up, but there's just a lot of damage into the mid lane as well. Off camera kill coming in, and mid lane definitely will be taken down. Okay, so this Esmeralda mid lane is working well. They're working pretty well with this composition, and this Grok is giving a very like problem to the Benster, and they just changed the this lane with the 1-1, and now Yuzong is up against the 1-1, and now the Grok can easily roam around with that his stuns and everything and immunity. So now, who do you think like any chances of the blue team to like do something else? Okay, so now we are seeing another team fight, and Zuxin has been taken down 0-3. Pity for Zuxin. Before even she's able to do anything, she's been taken down. Red team hero has been Crazy damage coming up, and on top of that, you're talking about Clint being taken as well. This is just a damage on damage. 3 members are down, 1 did just spawn in, but this Chow is not able to give up the princess that we were expecting. So I want to see what kind of a game that blue side will be bringing in. Benster, they have low kills, they have low damage, so it's going to be such a problem for them. But there's going to be a little bit of nothing wait. Roger is behind on farm. Link is quite ahead. Plus him trying to come up with the backlinks is just so pretty. Look at that! Look at that! Once again, mega kill picked up by this Grok. He's just not stopping him. Yeah, and we just saw 1v1 in that bot lane, and 1-1 is dominating. Okay, so Clint died again, so it's not a good thing for the Benster, and they're losing a lot of team fights and plus the laning as well. And okay, so good ult from the Franco, and he will be taken down. Question, he can't even use that, and even that Frozen was there, so even Cho wanted to cancel that ult, but still he can't. And still they're pressuring in, and Zuxin will be hooked, and he will be taken down by Grok. Okay, so going pretty well for the blue team turret has been destroyed. THT TKY. And what do you think now? Benster, they're in deep trouble as of now. Low kill, low gold as well. Look at them, Grok onto the back lane. He's trying to survive it out, but that's just 3 members getting stunned up by his ultimate. The mid lane will be targeted, and I believe the tier 2 turret of the mid lane will be gone down as well. Hot lane pressure is up. You're talking about how 1-1 wants to take a little bit of a stack so that her ultimate will be unlocked, but that's not the case. Ilza will be taken down and unapproachable for this. Link takes up a double kill, looking for a triple. He's just very, very low. I think he can go in, but he did not. But it's okay. It's okay. He did get it. There's no Lord as of now, but the mid lane is in jeopardy. Let's see if they are able to take it down or not. Yeah, we have to see, and we have to anticipate Blue team turret has what been the outcome will be. As of now, we are seeing it's full domination from the TK buy side, and the goal lead is as well. It's almost like 14k goal lead is there, and for the comeback, they have to do some miracle plays. It will be pretty tough. And now the Lord has been there, so the first Lord
in this particular match will be on the blue team side, and they took the Lord. Can they defend? That's the question. There's a question about let's see if they can defend or not. The Lord's going to be such a hefty price that they have to pay. Now, if they don't actually get it in easily, like if they go for a successful defense, we might be looking at another Lord coming in, but that's not the case. Mid lane is coming in, top lane, you do see a storm is going down. I don't think that's a good timing for them. Black Dragon Form just too immune, is just on time, but they are using up resources very quickly. I don't like it, but at the same time they have to survive, so that's going to be such a problem. Now lots coming in, the minion pressure is up. Bot lane and the top lane are quite synced up, so I think that's a good case. But oh, wait a minute, this was what I'm talking about. My goodness, the suppression was so good. Along with the Winter Crown, there comes the Ling who gets the kick. He's trying to get out of the position. He does have his ultimate, but he did not make a bad play. He's just waiting it out. Bottom lane inhibitor gone, mid lane inhibitor gone. There comes the Yuzhong cannot tanking as much as damage as he can. He's not the Yuzhong we know anymore. The Lord's coming in. The base is getting targeted. There's a hook coming in, and oh my god, TK Bye will be winning this match. Hey, so it was a complete domination by them. Let's go. What a match we just witnessed. And they just capitalized the Franco very, very well. Yeah.
match of the day 4 knockout stage, and this match is between Manung Congo versus अलग टीम का नाम क्या था? Okay, so Manung Congo versus Friends Loyal. And in the red side, the Friends Royal is there, and in the blue side, it's Manung Congo. Sorry if I can't pronounce that pretty well, because it's not from my place. And then the first band will be Florin, and it will be the first band from for this match. And in the red side, we will see another band. So Florin is a good band, but if they want to go for longer fights, so because Florin can heal like everyone in a very instant. And the next second band will be YSS. And now another band we'll see from the blue team. What it will be. Demons shall bathe in their blood. Your team The is light banned. belongs to the So it will be Alucard. Okay, so Alucard. I wanted to see Alucard in the match, but it seems that we won't be able to see Alucard. And now the second band we will be seeing from the red side, which will be, I guess, some sustain like Lapu Lapu or something like, okay, so Belleric. Is banned. Okay, so they don't want Belleric, I guess. They don't want to deal with against Belleric, I guess, for some reason. I don't know why. And now we'll be seeing, okay, so 1-1. Fun is all that matters. So 1-1. 1-1 is a good band. And from which will be the third band, and after that we'll be going into the picking phase, and they might ban some EXP, I guess, or okay, so yeah, they are banning the EXP, which will be glue. On the sticky hands of that glue. Who even wants the sticky hands? No one wants the sticky hands. It's too shit. This one. Okay, so now the first pick will be there, and it will be Ace Kun. Okay, so very Japanese name, but this guy will be not Japanese, I know, because it's an Indian tournament, obviously. So now the first picking will be, I guess, Lancelot or Lapu or some. It's tough to predict. There's lots of meta heroes are there. No. Okay, so it's work. Okay, they're pretty unlikely. They picked it. Work. Xbox is not a good, not a bad pick. Can sustain a lot of damage, and that he can just give true damage as well while teams are chasing him. And we will see Lapu. Are they gonna lock this Lapu? This land is or our not? Yeah, they homeland, locked and it. will soon be your burial And ground. those abs from that Lapu, he seems pretty strong. Okay, so such a big abs. Okay, now we will see some another pick from the red side. I don't know what it will be. I guess it will be a mage or mage, because they still are hiding the MM. Okay, so mage. Okay, so Gushan. Gushan. Okay, so I was not expecting Gushan, but still they picked. So who knows? He might be a very fast man, Gushan. So who knows? Now we will see Farsa. Okay, Farsa is a very good pick because she's a very dominating mid laner in this particular patch. And now the third picking will be there from the, I forgot the name of the squad name, so sorry guys, and I'll just say blue team, and it will be Moscow. Okay, so are they gonna lock the Moscow or not? I'm not sure, but they might do, because Moscow Trinity build is pretty good. Okay, so Moscow will be picked. Burn this wretched world. Okay, so I just got to hear the team's name. It's Manung Congo. I might not pronouncing it pretty well, but that's what I know. And then in the red side is Friends Loyal. So this will be Kimi pick, the last pick. I mean the third pick. And now the banning phase has been started again from the Friends Loyal side. And the
I think they will ban now because the two roles are still left for the blue side, and it will be EXP and Roamer. So now they are considering for the EXP because the Lapu is there. So for the counter pick for the Lapu, it will be, I guess, CC or Esme. I will choose Okay, so my Arlot. own path. Okay, so they don't want to deal with that final slash of Arlot. Okay, so they banned the Arlot, and now we will see another ban from the Manung Congo team, and it will be, I think, two roles are still left from the blue side as well. Fence Royal, they didn't pick their MM and Roamer, so now they will ban Iritel. Okay, Is banning. don't want that heat from that tiger and that girl who rides tiger. Thorns remain. Okay, so Lancelot has been banned. We will not be able to see any Xing Xing in the match, which is pretty sad. I wanted to see those Xing 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 Xing. Because so now we will see the last ban of this match, and I think this match, this ban will be some roamer, like Minotaur or like, or not Kufra, but okay, it's pretty unpredictable because I think they want to pick some support roamer as well. So now I think they will ban Minotaur, I guess. Minotaur is very good with the healing and stuns as well, so who knows? So now we'll be seeing our last ban, which will be Granger. Okay, Granger. Okay, so they knew that they haven't picked their MM, so now Iritel has been banned, so Granger is pretty open, and so that's why they don't want to deal with that Granger damages. And here we are seeing Angela. Okay, so Papi Poo. So we'll be seeing Angela. So it's very random. I was not expecting Angela. But still, Angela and Lapu combo will be very strong with that. Lapu's brave fighter, that ult will be very strong. And now we are seeing some crowd control picks from the blue side, which will be Tigreal. Okay. Okay, Tigreal, so he will show us some keyboy plays, I guess. And Esmeralda, okay, so now I'm questioning their draft, like which will be hyper, Esmeralda or Xborg. For me, I guess Xborg will be much better for the jungle because he can clear much faster than the Esme, I think. And he can also gives, like he could also poke the enemies as well, but and Esme is as well easy good against the Lapu Lapu, so that's why I'm thinking, but I guess I might be wrong. And in the blue side, we are seeing Claude. Okay, and in the blue side, we are seeing that Esme will be jungle, like, and it will be confirmed, I guess. And so both teams have picked their heroes according to their. And now we'll be going to the land of Dawn. And by the way, guys, giveaway is there for the 100 likes. And you might be that winner. So after liking the this particular stream, then just give a comment that you liked, and you might be the winner. Who knows? And you'll get free Starlight Day of this season. And also, please like and subscribe. We'll be very grateful of that one. So, guys, we'll see this match. It seems pretty exciting. Looking at the draft. Okay, so come in, guys. Which team might win? Your favorite teams, your favorite players. Okay. Welcome to Mobile Legends.
5 seconds till the Okay, enemy so reaches welcome to the battlefield. land of dawn, guys. Smash them. Now the match has been started, and Esme Hyper versus Gushin Hyper. We are seeing here, and looking at the emblems, it seems that Lapu wants to go a little bit of damage instead of that sustained emblems. And from the blue side, we are seeing that Moscow is going inspired. First blood. Okay, so first blood by that Claude. I don't know how he got that first blood, but still he got it, and Tigil is dead. But he respawned again, and Moscow is going critical instead of Trinity build. So now we will be seeing some good damages from the both side. Claude is doing pretty well against this Moscow. But it's not like he's winning the lane, but okay, so Angela is going to help Claude, and there will be no skirmishes till now. Everyone is playing very passive, and now we are seeing some ambushes in the goal lane. So are they going to... Yeah, कर दिया तो. Why are you speaking like this? Pause. Go. Okay, so guys, sorry for the inconvenience, but we are pausing the game because Tigil is having some network issues. So after he fixed his network issues, we will restart the game. Resume the game again. So kindly be patient, guys. Okay, so thank you guys commenting that one. Yato Kino, thank you for that comment. Should I bless or what? Okay, so guys, sorry for this inconvenience, and now we can resume the match. So thank you for being patient, and it will be resumed. Okay, so guys, now we are back in the game, and sorry I can't sing a song, my voice is not good. And Moscow is also having some network issues, and Claude will be taking him down. So I think we have to pause again, I guess, because the blue teams are having a lot of network issues. First the Tiger and now the Moscow. So, and another kill will be picked up by Gushan in the mid lane. Farsa will be killed, and okay, so Kimi is being very annoying to that Esmeralda, and Xbox is having a little bit trouble, but he will be safe. Okay, he escaped with that 10 HP. And now the turtle time. Okay, so who will be taking this turtle? I think there won't be any contest for the turtle because Esme is more prone to that red buffs. She wants to take the buffs first, and in the goal lane we can see it. Okay, so Farsa will be taken down again by Gushan. Okay, so this Gushan is really that fast 10. I guess
because they can't dodge that cushion even if the Farsa had that flicker, but still. Okay, so now in the bot lane we are seeing some skirmishes. Who will be taking down? Okay, so now Tiger is pretty low and Moscow is as well, but they will be safe. And okay, so now in the bottom lane, pressure is there. Who will be killed? Are we going to see some plays by Tigreal, some keyboy plays, or they are just going to be taken down? Okay, Tigreal is level 4 as well, and now we can see that in the bot lane they are still there, and pressure is still going on, and they want to gank, but they can't. Okay, so Esme went in and Angela almost dead. Okay, so a beautiful flicker play by Farsa, and Esme is dead, and the blazing duet has been there. And okay, so beautiful play by Tiger as well. Okay, so good team fight by both of teams. Timmy is just one shot away, but okay, so Gushan came again, and Farsa is dead. And Moscow, beautiful play by Moscow. Wow. Even the Angela was there, but still he couldn't protect that Cushion from that damage by Moscow. I appreciate that comments by Nato Gigam. Okay, so yeah. Okay, sorry for pronouncing your name incorrectly. Nato Gino, I guess your name is there. Okay, you know. Appreciate it. And now we're going to see another turtle fight. Okay, so victory gap was there by Esmeralda, and okay, so good set by Tiger, and can okay, so no kill will be picked up. Okay, Lapu went in, a beautiful brave fighter by Lapu, and he was taking down the Esmeralda, and Farsa has been died again. So it's a pretty good situation for the red side, but we are seeing that Moscow is doing the split push, and Xbox is low, but he don't want to. I guess he doesn't want to go space, and the mid lane will be taken down. So I think these mid laners are having fun. Angela and Kimi both are emoting and recalling, and now that red team really needs to do some beautiful plays so that they can have that. Okay, so beautiful plays by this Agil and Farsa. They just took down the Angela, so there will be no healing for the red side. And so this Lapu is playing so good, and Gushan is showing his fast hand, and Gushan will be caught by the Agil and dead. Okay, Moscow will just join the team fight, and Moscow is giving a lot of damage to the Claude, and okay, so SOD has been connected, but he won't be going in because it's a very risky play, and Angela is there for ulting both of them, and so beautiful team fights we are seeing, and Xbox is almost dead. Can he survive? He survived that one. He couldn't burst down that Xbox. Okay, so good team fights we are seeing. They are not wasting their time. They are fighting every second. Every second we are seeing some team fights in every minute. And now another turtle is about to be respawn, and I guess it will be pretty tough to say that because we are seeing that both the teams are actually exchanging a lot of damage, and the gold lead is just 2k gold lead is there for the left side. In the blue side, they are also doing pretty well. Okay, so good save by Tiger, and they pick off any kill. Okay, so Angela is dead, and Gushan and Claude will be. Well, Claude can escape. Okay, so good set by Tigril, and now this turtle. Okay, so Moscow went in with that SOD, and Dressing Duet was there, and they will burst down. Okay, so Lapu is doing pretty well, and with that zoning out. Okay, so Lapu has been taking the turtle. Oh, I guess Esmeralda has missed there. Okay, so Esmeralda is still giving a lot of damage, but now Esmeralda will be caught, and Esmeralda will be dead. And Lapu is still going out, charging in.
He doesn't care about that damage from the Farsa and anyone. He's just going in. He's okay, so they fight it again. He ulted again and he picks off Tigreal. So Lapu just doesn't care about anyone. He will just go in. Okay, so good play by Export and he will just escape after killing the Angela. I think the red side Angela thought she's invincible, but she is not. But Lapu is really invincible at this point. He's not dying with that Angela ult as well. And his healing is pretty good. Even if the dominance ice was there, but still they can't burst him down. Hero has been slain. Okay, so good play by Gushan. He just killed the Moscow at 1v1 Moscow. Okay, so good set by Tigreal again and Kimi is dead. So now Lapu is alone in there. Can he do something? Can he pick off any kill? But he has to run away. Can he run away? No, he can't. Okay, so he just ran. Oh, good play by Angela. He just. Oh my God, Revert alive this time. Okay, so Esmeralda, the trade-off will be there. And Kushan, he will take down Farsa again and again. Farsa is like food for this Gushan. He's just going in and killing Farsa every time. Every team fight, we are seeing that Gushan is targeting the Farsa only. But this Tigreal, I love his setups. He's just showing his like a keyboard plays. Just as I predicted, I was thinking of that one. And okay, so now they are trying to take the red buff. Okay, so that ult he missed. Gushan just ran away with that one. Now Angela is ready to ult Lapu, and then Lapu is also being a little bit passive about the team fight. So now the Lord has been there. Lord has been respond. Okay, so Lapu went in with that Angela ult. Can they take down Moscow? Okay, so they beautifully take down the Moscow, and Blazing Duet is also there. And okay, so they will take down the Tigreal as well with the Esme as well. Now it will be 2 versus 3, and Gushan will go for the Farsa again, but he will miss those kills, and Farsa will survive this point. Okay, so I guess this will be a free Lord for the Team Red, which are Friends Loyal. Okay, so they have taken the Lord, and now we will be seeing another team fight, but I think it will be a little bit late for the team fight because the Blues team will be playing very passively because they have to defend for this Lord again. But still this red side, they will push forward and they want to push to that top side, I guess, and bottom side. Okay, so by the way, mid lane, it's in the the inhibitor is only there, but for the top and bottom side, the second turret is still there, so they can still defend that one, and they have to maintain these towers, and they have to push as well. So for now, we are not seeing anything, and Lapu is just clearing the lane as well, and Xbox as well, and Moscow and all, they are defending. I see that in the red team side, they didn't use this Lord that much. They just let them. Okay, so good play by Lapu again. Can he kill that Moscow? No, Moscow will survive. And Tigreal ulted, and Farsa will take down that Lapu, and Gushan will go in, but he missed his first kill, and it will go for the minute. Okay, so good play by Farsa and all, and Kimi is in the very bad position. He will be okay. So good takedown, and Esme is also taken down by Cloud. Now we can see that that emblem of that Farsa is going pretty well. That in Lethal Ignition, it just took the. Okay, so another play by Farsa, and good ult. Okay, so Cloud has been taken down. He should have seen his position at the time, but it was pretty late. Farsa was already there, and he took down. Okay, so now we are seeing good counter team fights by the blue team. They don't want to get dominated like the other matches. They want to fight as well. They will say, if you are biting us, then we will bite you as well, even if the bite force is not that much, but still we will bite. Okay, so now the red team are considering a little bit about the team fight. Okay, so in the mid lane we are seeing some, and they took down both of them. Oh, good plays by this blue team, and Tigreal is doing so well. This Tigreal, they can't even get away.
Okay, so now Gushan he just ran away. He tried to kill one, but he couldn't kill that one, and after that he has to escape. Okay, so now without the Angela and Kimi, are they going to again go in with for the team fight? I guess Lapu is not invincible anymore. He's thinking of the team fight. Will he go in or not? But now no one is there, so he will not be going in. And Claude is doing the split push again. And Gushan is going for the Moscow. He's looking for the Moscow. Can he take off? Can he take him off? No, but he's still being considerate. Okay, so we are seeing the 1v1 in that, not 1v1, but the export tried to defend from that Claude, but Claude will still take down that second tower. He doesn't care about export, he only cares about the... Okay, so good setup by Tiger again, and they will take off the Kimi. And Lapu went in. Can he take down anyone? And okay, so Master Farsa just flickered, and Lapu just tried to take down Farsa, but he couldn't. Okay, so Esmeralda is sustaining a lot, but still he will be dead. Okay, now they were still forcing in, and Gushan will take down Moscow. Okay, but still he will be punished as well by Tigril and Farsa. Okay, so Export is in a very weird position now. Like, I don't know what he's trying to do with that position. Like, he wants to steal the Lord, I guess. Because even in the red team, they don't have the referee. And okay, so now Lapu is zoning them out, and Claude is trying to take that. And can he? Okay, so beautiful catch steal by Export, and Lapu has taken down the Farsa as well. So red team is very angry. They have a pretty grudge against this blue team because they took down that Lord. And now, what are they going to do? Okay, so Tiger has been taken down again. So now it will be 2v5, but with the Lord. So now, what are they going to do? Are they going to defend or are they going to go in? And Esme and Moscow, they both went in and they both are gonna get punished. They said, okay, so if you guys are going to underestimate the 5 men, then you will get punished. So this is the wiped out. Is this the end or not? Farsa and Export are there. Tagil is about to come. So the unlikely situation for the blue team. Can they do something? And Farsa, he's dead again. Gushan take off the kill. Oh, and good setup by Tagil again. Oh, but there is no one to give damage. They can't defend. I guess they can, but Export is trying his best to defend, but cannot. Claudius has tower locked. And this is the end, guys. So the team that is won is Friends Loyal, and we will be taking a little break. After that, we will start another match. So that was an exciting match. I hope to see more matches like this. Okay, so guys, bye. बंद कर दो.
Okay, so guys, we are back in another game. And this game will be, I think, pretty exciting because the commentators, the comments that we are seeing in the live, now they are playing. Fun is all that matters. And in one side we have Ignite Terror, and in the other side we have Team Papa and Rockets. Koopa are the Your best team partners is in the banned. But world. there's no name that we're saying like Jesse or James. So the first ban has been 1-1 and Popol. I will choose Okay, so my it's a own. pretty weird ban. Is Like banning. Popol, I think This land they is know a that someone homeland, plays and Popol it very will well. soon That's be why your I think. burial ground. So that's why they banned, and Lapu is also banned, and Alot as well. So they don't want the final slash, and they don't want to deal with the brave fighters. So they just banned it instead of dealing with them. play the hero. Okay, so another ban will be the Dragon YZ Yuzong. He's so good in this particular meta, and then the patch has just given him the pretty buffs. So he's so good that they just ban, or they just pick it. The pick rate is pretty high for this Yuzong. So the Uranus is also banned, and I think they don't want the sustain heroes. Okay, so first pick we'll be seeing by Yatulino will be the Farsa. I guess they didn't lock it yet, but okay, so Farsa is very good if they pick it, yeah, Payback. and they locked it. Is picking. So now we will see the counter picks for this Farsa. What are they going to pick? They can pick Gato to stop that air raids from the Farsa if they want to stop, because with the Gato's ult, he can directly jump onto that Farsa and it will be disrupt. So it will be Sicilian. So the counter pick for the Farsa will be Sicilian, and now Power of Pegasus. Badang is they are big Your Badang team as is well. picking. Okay, so Badang is also very good because he has a lot of stuns with that punches. And who wants to get punched in their face? It's like Mike Tyson said, everybody is brave enough, but till they get the punch in their face. So now we will see Xpork. He can take those punches. I guess he's just too much, like shield is there. And Moskov, okay, so we will see Moskov or not. Okay, so the blue side is still considering the Moskov and Kerry. I've been Okay, so waiting for Kerry too has been long. picked by the Ram. Okay. And Xborg will be locked in as well. Team is picking. So now the counter picks for them, what are we going to see? Now the Kerry is there, they will not be picking any utility jungler or like, because Kerry can easily melt down the tanky heroes because of her true damage, and if she got that DHS, then it will be so good. Time and tide Okay, wait so for no Beatrix one. for the laning counter. So now the picking phase has been gone, and now the drafting phase has been started again. So now the fourth ban will be from the Voldemort. Okay, so pretty scary name. Okay, so Voldemort. I have a high hopes for this Voldemort. He put his name as the Voldemort. Now he should play like the Voldemort. Okay, so Sticky Hands will be banned, which will be glue. No one wants those sticky hands because it's pretty disgusting. And Alucard will be banned as well. Okay, so my dream of seeing Alucard will be disrupted again. Alucard will be banned again, and Brock as well will be banned. And now the last banning from the blue side, what it will be, it might be, I think, okay, so Belleric has been banned because Belleric will be very irritating towards the carry. So now, okay, so Kelia, they are thinking of Kelia and Kufra. Okay, so they're still looking for the roamer. They're not still decided yet.
And Carmilla, they are thinking of picking Carmilla, but who knows what are they going to pick. Carmilla is good, but with the team composition for the enemy team, like it will be pretty tough. Even if she connects those blood curse, but still they can easily get away with this one. But it will be tough for the carry to run away, but others they can easily run away. Okay, so they've locked in the Carmilla. So the Carmilla and Cecilion, the couple combos we will see now. Okay, so from the blue side, you are seeing some sustained utility junglers. Okay, so Panda, they were thinking of Panda. Are they going to the Akai? So, okay, so they're looking for the another heroes as well, not only the Akai. So Suyu is very pretty off meta. Last season he was in the direct top of the meta, but now this one he's in pretty off meta. So are we going to see Suyu? Okay, they've locked in the Suyu jungle. And Franco as well. They are thinking of picking Franco, but I think okay, so they've picked the Franco. So now we will see another hooks. So previous games we saw some hooks, pretty nice hooks. I think we are going to see some pretty nice hooks in this match as well. And okay, so they have picked YSS. Okay, so YSS will be the last pick by the Team Ignite Terror. Okay, so guys, there is a giveaway of Starlight in this particular season, and the giveaway will be held if the likes are 100. So guys, like and put the comment like you guys liked it, and the winner will be chosen. So you will get the free Starlight. Okay, so guys, the picking and drafting phase has been gone, and both teams are in the loading screen, and the match will be begin after some seconds. So by the looking at their composition, for me, I would say that Team Rocket has a good composition, but I can't say that Team Ignite Terror have a bad composition. They have a good composition as well. They have the late game, plus they have the stuns, and they have the damage, and everything is there. But if the synergy for the Team Rocket is good, then it will be pretty tough for the Team Ignite Terror. Okay, so as I've said, guys, like that there will be giveaways. So if you guys can help us to reach the 1K subscribers, then please help us with tapping on that subscribe button. And the match has been started. So welcome to the land of dawn, guys. And both the junglers will start their buffs from the EXP side, which is a common trait, as I said before as well. And after that, okay, so if we focus in the goal lane, that they are just taking prioritizing the like the minions, and they're not exchanging any kind of damages. Even in the EXP, we saw that they are just taking the minions. After that, they are not exchanging any damage towards each other, and there is no contest for the Litho, I guess. So okay, so good hook by Franco, and YSS will be okay. So sweet hook by Franco, and he took down the YSS. A very good play by Tipsy and Yatulino. The synergy was pretty good, and they can take down YSS pretty easily. So it's a heavy loss for the Team Ignite Terror, and Kerry is pretty in a very bad position, but he will be able to escape. Okay, so Suyu is going on. So can they take down Carmilla? Okay, so good play by Suyu and Kerry. Okay, so now
the top lane is getting the pressure. Okay, so now they will disengage that one. And in other lanes, we are not seeing that much like fights and everything. Only the gold lane, we just saw that there were some fights and Carmilla just lost her life. So now the turtle is about to be spawned. Both teams are going in their respective positions. So now we will see that which... Okay, so YSS, Franco just saw the YSS and he's doing pretty well with the vision. Okay, so YSS just ulted and... Okay, so Franco just got away and they took down the SOA. So good play by... Okay, so good hook by but still they... Okay, so nice hook and ult by Xborg. They just took down... Okay, but still they will be able to punish them as back. And they are trying to go and beautiful play by Farsa. They just took down the Carmilla. Okay, so this match is going very exciting. Both teams are exchanging a lot of kills and lot of damages and lot of skills. So now they or this SOA is starting the turtle. Now which team will get the turtle? So the YSS just took the blue buff and is coming for the turtle. And who is able to take the turtle? Okay, so good retrieve by YSS. And YSS is still in the danger. Okay, so Xbox will be taken down. Okay, and Farsa is also in the danger. And Xbox took down 2 kills, but still Badang just said, it's okay, let me trade off that one. And he took down Farsa. But still, it's 2 for 1. So the red team lost more, but still they got the turtle, which is a good sign. And in the gold lane, we are not seeing anything in the gold lane. Both MMs are playing pretty passive. In the mid lane, we are not seeing anything as well. And now the both teams are just playing very safe. And now I think we will see another fight in the gold lane because both teams are going in their respective positions. Okay, so Carmilla is giving vision and that so okay, so 1v1 by this one in the EXP. That I think that I was not expecting Badang to lose this one, but Xbox just killed him in the 1v1. Okay, so now in the goal lane we were about to see some team fights, but they will just disengage. And I think we might see another hook. Okay, so it was about to get hooked, but Carmilla will be safe. Okay, so now they will just disengage the red team, and still the blue team, Franco is still there in the top lane, Carmilla as well. Okay, so beautiful ult by Carmilla, and they will take down. Okay, so very bad position by Kerry and Franco. They should not have stayed there. Okay, so SOA is still in the trouble. Okay, but still he can escape. Even he's an assassin, but still he will be able to sustain those damage from the Cecilion. Okay, now the top lane has been taken down by Beatrix. And it's not a good sign for the blue team, Team Rocket. They have to do something now. They have to take the revenge. They need to take that back. Okay, so Xbox is in a pretty bad position. Okay, so good play by Badang, but they can't hold down. Badang missed his second, but still okay, so YSS first is able to take down Xborg. Okay, and Franco is tried to hook, but he just missed that one. But okay, so now I think the turtle will be free for the ignite terror. They can take the turtle easily, I think, because there will be no contest. The hyper is still coming, but it will be too late, I guess. Yeah, and it's late. Without the EXP, it's too tough to take the turtle because there's no one to zone out. And beautiful ult, but it missed. But still, and they're going in. They're getting very aggressive, and they are not able to take down. But we just saw that in the gold lane, Giri just lost against Beatrix, which is pretty highly unlikely. Then I think this having a little bit skill gap with that Beatrix. But okay, so another so Vice is beautiful damage. And he will be able to escape that Xborg out, and Badang out at this one. Again, they take down, and easily they can take down Xborg. Okay, so beautiful hook by Franco, and Badang will be taken down. Okay, so this match is going very exciting. Both teams are at their similar level, but the goal lead is in the red side, which is almost like 3k goal lead is there.
And Vices is doing the push. Okay, so in the problem we are seeing another. Okay, so taking easily burst down Franco, and Suyu is trying to take the revenge of the Franco. Can they take them? And Farsa has just showed her that air strike. Blue team turret has been destroyed. Where you're going? I have a long range. You can't run away. Okay, so now in the as a tower lead, red team is winning, and the blue team is trying to take some towers, but they are not being able to. That's because the red team said, "We are seeing you. You are not. You can't do that one. You are not being able to distract us and take towers. We have eyes in our all the map." And Xborg, he's alone there, but he will be pretty safe because he can sustain a lot of damages. And only Badang is going there. So now in the mid lane, Turtle is about to be spawned after 10 seconds. On Beatrix, he just lost her position, and the Franco and Kiri will take down that one. Okay, so Farsa has just used her ult, and Farsa, can he run away? No, she will not be able to. Beautiful ult by Carmilla, and they will be able to take down everyone. So triple kill for. Okay, so Maniac for that YSS. And it's a very, very good thing for the red side, Ignite Terror. But this is the first, I think the first Maniac in the series of this knockout stage. And it's not a good situation for the Team Rocket. They are in a very crucial position, and they are trying to pressurize the bot lane as well. So if the red team maintains this particular pace of their fights and everything, I think it will be pretty easy match for them if they can control the whole team fights like that. And Franco will be taken down, I guess. Okay, so Flicker will save him. And good out by Carmilla as well, but I think they will not be able to take any kills. The Finland is pretty low, I guess, and he needs to go back, I guess. But YSS is still trying to go that one. But guys, okay, so good. The hook by Franco. Oh, just as I said, like we will see some hooks, and we are seeing some pretty good hooks by Franco. And a very good target. YSS, he thought he can immune those hooks, but he can't. Okay, so now the match is getting interesting. So as I've said, like blue team needs to do something, and they are showing those things. And Franco is still trying to look for the Beatrix, but Beatrix will run away with her Flicker. It seems that Cecilion is in a very bad position, and he will be taken down by the Feather Airstrike. And the hook was there, but before the hook was a bit, he will be dead. And a good ult by Carmilla and Franco. They will be able to take him down. Suyu and Farsa. Okay, so many exchanges we can see here for the both teams. It will be 3-4-1. And now I'm seeing that in the red side they are able to maintain the pace, but still they are having problems with it. Somehow they're throwing, but still they are able to get back with that. And Export, can he do 2v1? He's able to almost. Carmilla was almost dead, but still he can sustain all that damage from the Export. And now YSS went in. He will be taken down. Okay, so he just survived. Oh my god. Okay, it's a beautiful play by YSS. He just got down, and another play from the Badang, and they will be able to take down Farsa. No, Farsa will run away. Okay, and good play by Farsa. He just took down YSS because of that little ignition. So YSS should have taken care of that little ignition before. He should have just be cautious more about that one, because Farsa has a lot of damage, lots and lots of damage, and if she cuts her items, then it's purely a chaotic damage. Okay, so another good hook by Franco, and Carmilla is getting hooked. They're trying to get some exchange, and they will be able to get some exchanges, and it will be 1-4-2, oh sorry, 2-4-2, and it will be 3-4-2. Okay, so good play by Team Blue as well. So Team Rocket is still trying to do their best, and they are doing a lot of things. They're not letting the Ignite Terror just go, like not without punishing. They are not letting them go, and they are still taking some exchanges of that kills and deaths.
So now the match is still very interesting. Only like 4K goal lead is there between these teams. Okay, so Franco tried the assumed hook, Red but team it turret will has not been land because destroyed. Pitrix's position is pretty good. And Pitrix KDA is pretty good, and also like Curry is trying to push. So now they have to maintain distract the teams as well, and they are trying their very best. And now, okay, so Suyu will be taken down, and Franco as well. So Kerry is still pushing, and the Lord will be for the Ignite Terror. So Kerry is still pushing, and can she take down the Ignites? Okay, so she has to go back because Padang has recalled, and he came back to defend. Okay, so now the Team Rocket are showing us the macro side of their play, but still the more advantage is in the Ignite Terror side. So now they have to do some miracle plays. Okay, so Vices went in, but he doesn't have any damage to take off. Okay, so now, okay, so good play by Padang, but he will be taken down, and Carmilla also altered, but no one else will be. And they caught the Carmilla. Just when I said no one will be caught, but they just caught Carmilla, Barca. Carmilla is so good with her Blood Curse ult. Okay, now the skirmishes has been over, and 1-for-1. It will be EXP for mid laner. So now the pressure is still going on for the Team Rocket. They have a lot of pressure in their hands, and they have to deal with the pressure, and they have to play in their like calm minds, because if they are having a lot of pressure, then they will throw. And it goes for the same red side as well, because okay, so Beatrix is alone. Okay, Vices and Beatrix trying to do something, and okay, Vices went in. Okay, and a lot of damage is looking from the Vices. You can see that one. And Suyu is not being able to handle those damage from the YSS, because it's a lot of damage, and YSS he almost got his all items, and Varsa and Kerry, they will be able to take down Padang. We're seeing a lot of good hooks by this Franco, and he's doing so well with this particular composition. For me, I was thinking like it's a very weird composition. Okay, Vices is alone there. Can they take down Vices? And no, but Vices will be run away. Okay, so Beatrix is going alone there, and Beatrix is fighting the bird. Okay, so good hook by Franco, but it will not. They can't do anything with it. Okay, so now the team fight has been started, and Suyu will be taken down, and so okay, so Gary as well is taken down, and Franco is trying to hook. Okay, so X4 took down the Carmilla, and now what can they do? Are they going to be able to defend? Okay, so Cecilian is doing so well with her damage, and now Beatrix damage is so high. Okay, so yes, his Cecilian damage is so good, and Franco altered Beatrix, but it will no damage is there, so they won't be able to take down him. And now only the last man standing, X-Fork. Okay, so they just tower lock, and the match is over. It was a pretty exciting match, but Victory! what can we do? The skill level was very so late. So as you can see, Suyu is getting the bronze, so it's not good. And guys, the match has been over. It was a pretty exciting match. So we will see you in another match. Stay tuned.
मत करो ना भाई को क्यों सोच ना क्या बोला है अंदर है इसको हम जितना ओवर फोकस करेंगे ठीक है ऐसे ध्यान दूसरा ओवर फोकस करते हैं आ ना सके मजा नहीं हो क्या मजा नहीं करते रहते हैं बात नहीं करते तुम बोला हो तुम कहाँ में है फिर बाप ai nung brown na देखा ही नहीं जी हमने तो नहीं देखा हूँ देखने वाला पेज आ सकता ना हम दोनों का Red team hero has been गलती कर दे slain. रे बयान ही है तरह से इतना आया ठीक है इसे एक बार जान देना चाहिए एक वन साइड होने से मजा नहीं आना है कि नहीं तो नहीं तो आगे मारने में क्या चीज ला आना तो तुम ज्यादा लग रहे हैं
हम अपने 12 लाइक कहाँ से खेल रहे हो? ये मेक से क्या बात करता है? एम्ब्लेम से नहीं होता है भाई। वहाँ में ऑलरेडी मेक से फाइटर लोग भी मेक से देखो। अरे हाँ ठीक है चलो एक्सचेंज करेगा। इसको उसका क्या नाम था? एक्सचेंज करेगा बोला अभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों देगा थोड़ा? Hero has been slain. Wiped out. बचा है रे। Red team turret has been destroyed. नेक्स्ट टीम कौन कौन सा था? पता नहीं कौन कौन टीम था? उनका 10 बजे से बोला है ना? तेरा कौन से Blue team turret has been destroyed. टक्कर दे देगा सबसे पहले। Blue team turret has been destroyed. दस बजे से आओ। पहले बुलाने से नहीं आ रहा था। 10 बजे को अपना टाइम पे भी देख रहा है बोलने से तो 10 बजे से आपको आ जाओ। इस पे होने तक चलेगा हम तुमको 0 में रख देगा तो जाता था। Turret has been destroyed. Ana. देख रहे ना देख रहे ना ये आया मार सकेगा तो हम क्लियर करनी है। कोई कॉल कर रहा है कौन कौन? क्या पता देखो ना उठाओ हेलो नेक्स्ट मैच तुम लोग का नहीं हो। तुम लोग रेडी होके रखो। इन्होंने कितना बजे को था बम्बल ओ ये लोग रेडी हो गए बोले चलो। रेडी हो गया हाँ Red team turret has been destroyed. सरेंडर कर दो रुको कौन टीम रेडी हो गया वेट हाँ इन लोगों का साथ है क्या आपको ही बात कर रहे हैं इन लोगों का साथ है क्या आपका Red team turret has been destroyed. अच्छा 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 टीम ईएसपी रेडी नहीं है रुको। आपको मैसेज किया नहीं करेगा ना यार। ये मार दिया वो
कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोग आप साइगा ही है ना। क्या आपका भी भूल जा रहे तो? नहीं मेरा घर में। हाँ नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बैन कर देगा ऐसे से। अभी तो हम चेक करेगा रे, डबल चेक करेगा आपको ना। हाँ हम लोग ऐसे कस्टम वो भी कर रहा था, ऐसे कस्टम खेल रहा था, स्ट्रीम कर रहा है। आपका भी वॉइस जा रहा है, हाँ बातें सुन के देखो कैसे गंदा से आवाज जा रहा है। ना Blue team hero has been slain. Red team base turret has been destroyed. Blue team base turret has been destroyed. Victory! Team ESP. Team ESP.
चालू हो गया क्या? हाँ. Hello guys, welcome back to SOA Plays Season 1 Knockout Day Match. कितना है? 4. Knockout me, stage your 4. team Day is all that 4 matters. है ना आज. और अभी हम लोग का राइट साइड में है टीम ESPN. On the blue side we have team Bumblebee. Let's go. Your team is banning. ESP रेड वाला है। मिस मिस हो रहा है। क्या हुआ? I think some glitches occurred. Let's see. May the blood of my enemies Your flow team from is my banning. spear. They call me a hero because I saved my Your nation team from is falling sinking. apart. Yes, you are. पता तो पता ये चल सॉरी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो गया था अभी स्क्रिप्ट देख के बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग दो टू बैंड देखने को मिला है क्या दो तीन बैंड देखने को मिला है तो 2 दिन ही क्या? और हम देखा ही नहीं क्या कि नहीं I, Minotaur, Your will team finish is off picking. what was left undone. गलती करने के बाद This land is our homeland, and it will soon be your burial ground. तुम देखो ठीक है ये मैच को अब हम टेक्स्ट कर देंगे। Harley is my most trusted partner. Your team is picking. Let them play the hero. Where the light shines, I will be the truth flowers this will world bloom. desperately needs. बोल सकते हैं करो हाँ ये तुम भी करो हाँ कहाँ से हमें कॉल उठाएगा ही नहीं तो ये लोग Hayabusa, Sanjo, Your team is banning. अभी के लिए बंद करके रखो ना अभी गलती से 6 बेन की जगह 3 बेन लगा के रखा है हम लोग का 10 बेन का 10 बेन हो गया 10 बेन का जगह 6 बेन लगा के रखा है तो इसलिए Crowned by heaven's mandate, Your team my is legacy banning. shall endure. Experience the euphony team of is suffering. Your The team southern is picking. seas are my domain.
बात सुनेगा नहीं तो ऐसे खेलेगा क्या नहीं तुम लोग सरेंडर कर दो ना, हम लोग वो कर देगा ना, रीमैच करा देगा। उसको बोलो ना सर। ये लोग ओपोनेंट रीमैच करेगा क्या बोल रहे हो? क्यों नहीं करेगा? ये लोग देख रहे नहीं। It is in despair Always that I trust see the the message fondest from your soul. तो ऐसे ही खेलेगा बोल रहे हो, ओपोनेंट सरेंडर नहीं करेगा बोल रहे दोनों। ठीक है तो ओके ठीक है, उधर डिलीट कर दो मेरा मैसेज को ना, हम क्या था। ओके गाइस, दोनों की तरफ से 3 बैन हो गया है। रेड टीम जो ESP है और रेड टीम और ब्लू टीम जो बम्बलबी से। Time and tide wait for no man, nor girl. काम आ गया। हम लोग ऑफिशियल कास्टर को। तो ये दोनों टीम तैयार है, मतलब 6 बैन पे। वो तो ESP थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है as compared to Bumblebees. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. नेक्स्ट करते हुए ये दोनों तरफ का हम ये आपको अच्छा से नहीं देखा था क्योंकि मिस मैच का कारण से, फिर भी टीम ब्लू ओके और एक बार बता देगा, टीम ब्लू बम्बलबी एंड टीम रेड ESP टीम। तो टीम दोनों का ड्राफ्ट बहुत अच्छा पिक हुआ है, इसके तरफ से देखते हुए अभी दोनों हाइपर ड्रॉप करने में बिजी है और ऊपर टॉप लेन गोल लेन में थोड़ा गैंक होने का पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है, जबकि बॉटम लेन में देखा जाए तो दोनों एक ही प्लेयर बहुत सेव करते हुए, टॉप में भी यही बात हो रहा है, दोनों बहुत सेव करके गैंकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी मिड लेन में थोड़ा गैंकिंग होने का कोशिश देखा जा रहा है और ये कलिता को मस्त सुंदर दोनों का कलिता आई एम सॉरी लूनॉक्स और इसका सिनर्जी बहुत अच्छा था। अभी NEXP लेन में भी थोड़ा सा हलचल मचलते हुए मिनोटोर अभी ये टर्टल गैंग करने के लिए इधर में विजन देने आ गया, क्लियरली देख सकते हैं नया बच्चा को थोड़ा तकलीफ हो रहा है मिनोटोर का कारण, एंड ये क्या लेंस टर्टल दे पाएगा या दोनों का टीम उसके लेंस से ले गया, देख सकते हैं बढ़िया कॉम्बो दिया तो खत्म कर दिया, लापू को भी बहुत सुंदर से मार दिया।
ये एनिमी जंगल का पक्ष होते हुए अधिकतर इसको फिलहाल हम लोग का कांसर अभी रेडी नहीं है, तो इसलिए अभी हम लोग है प्लीज हमको गाने मत देना। ऊपर में टॉप लाइन में तो बहुत हलचल चलते हुए दोनों टीम दोनों का ये स्किल्स आजमाते हुए, और लेकिन अभी देखने से लेकिन ब्लू टीम का लीड थोड़ा बहुत अच्छा से पकड़ रहे हैं। ये इन लोग का टीम का सिनर्जी बहुत अच्छा से मिल रहा है। ये नहीं बोल रहे कि रेड टीम का नहीं, लेकिन ये टीम का थोड़ा और ये सॉरी कितना बोलते रहते हैं लुनोक्स अच्छा कोशिश करने की कोशिश किया था, लेकिन उसका पेट्रीफाई कविता का पेट्रीफाई उसको रोक दिया। और बॉटम लाइन में एक्सपीरियंस में कुछ गेमिंग होते हुए आपको ये आई थिंक बच देगा। ओके, अच्छा कोशिश था ये लापू और ये हायाबुसा के तरफ से, लेकिन भी बोला है यहाँ कुछ कम प्लेयर नहीं है। अभी तो गया हायाबुसा अपना कमाल दिखा दिया और मैंने रिकॉल बेहतर होते हुए तो प्लेन पे बिना तो गेम करते हुए, लेकिन उसका पास टीम नहीं था इसलिए बच के खरीदा। सॉरी वो मिड लेन को बोल रहे हैं। मेरा जुबान बोल रहा है। आपको क्या लगता है बाबा जी कौन सा जीतेगा, कौन सा टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आगे का हिसाब से तो हम नहीं बोल पाएगा, लेकिन अभी जितना तक मैच चल रहा है उसका हिसाब से बोलने से ब्लू टीम का सिनर्जी और उसका टीम गेम प्ले लोग बहुत अच्छा से चल रहा है। सो आई थिंक या ब्लू टीम का जीतने का पॉसिबिलिटी थोड़ा ज्यादा है रेड टीम का कंपेयर में। अच्छा, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये रेड टीम जीतेगा, क्योंकि उनका पिक तो थोड़ा बेहतर है एज कंपेयर टू ब्लू टीम। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं रेड का कंपेयर में, लेकिन जितना गेम प्ले अभी हुआ है उसको देख के ब्लू टीम भी कुछ कम नहीं है, वो भी डोमिनेट किया है। अभी एक टर्टल भी ले लिया, अभी दूसरा टर्टल क्या ले पाएंगे ये लोग? अभी मुझे लगता है तो एक सुंदर सा गैंग देखने को मिलेगा, बट बॉटम साइड में 1v1 होते हुए और ये लापू नहीं मार पाया। इजीली लापू आराम से मार सकते थे। ओके, कविता का ये सुंदर अंतिम था, लेकिन वो हायाबुसा शांति ये सुंदर 1v3 था। ये मैप नहीं देख रहा है क्या? ब्लू टीम का मैप अवेयरनेस थोड़ा सा ठीक नहीं है, मुझे नहीं है लग रहा है मुझे, क्योंकि ब्लू साइड का पूरा मैच और हाइपर रोटेशन दे रहा है, बट ब्लू टीम का तो कोई भी आ ही नहीं रहा है। और लिस्टे में बढ़िया से फाइटिंग होते हुए, लेकिन कैजुअलिटीज तो नहीं मिला है। और ये कविता का सुंदर आखिर दोनों को लुकी गया है, और ये लापू भी पीछे साइड ये लेंस का लेवल, लेकिन क्रिएटिव बहुत मारने आते हैं। चोरी कर चुके हैं, वो भी दो बस बहुत आया इनका डिटा मीट पुश करने का ट्राई कर रहा है, इजीली पुश हो जाएगा ये तो। ये लोग लेकिन ये लेंस का गेम बहुत बढ़िया से चल रहा है। अभी तक ब्लू बफ पीछे होते हुए भी इसका लेवल हायाबुसा के से बहुत एक लेवल आगे में, और ये इस सेट में
प्लेन साइड में मिनोटोर का तरफ से विजन देते हुए क्या है अभी सिंग का फायदा ओके अभी सुंदर ओके लेकिन बच गया लेकिन ना उसका फ्लिकर बचा देते सब फ्लिकर जो उसको Blue team turret has been destroyed. रेड टीम लेकिन बहुत पुश कर रहे हैं ना पहले से दिखाई मिल रहा है स्प्लिट पुश को बहुत कर रहा है यार ये कभी पुश नहीं करता है जबकि ये ब्लू टीम थोड़ा बिल्कुल और फील का पीछे में पड़ा हुआ है और ये विनो का ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया उसे तो लग रहा था कि बहुत होने वाला है एनिमी बहुत दोनों साइड डिवीजन देते हैं लेकिन ये लोग थोड़ा लेन भी खेलने से आया ने कोशिश किया था लेकिन बच गया एंड हाँ ये लेफ्ट को एग्रेसिव से खेल रहे हैं ना थोड़ा और टाइप इन कर रहे हैं एनिमी का तरफ में लेकिन उसका काम भी यही है टाइप इन ही करना है एनिमी का बेस का तरफ और ये लोग शायद अभी लोड लेने की कोशिश कर रहे हैं let's see who takes the load first load तो पावरफुल नहीं होते लेकिन प्रोटेस्ट करने से और सुंदर किल दोनों का तरफ से जबकि ये बॉटम लेन में ये फिर से लेंस का शानदार रेसिस्ट और ये खरीदा को बहुत तकलीफ होते हुए क्या खरीदा बच पाएगा लेकिन नहीं बच पाया लेंस और खरीद किल्स में देखा जाए तो रेड टीम तो डोमिनेट तो दे रहा है बट गोल डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं 1-3 का ही है और टरेट्स में देखा जाए तो ब्लू और रेड टीम अच्छा पुश कर चुका है क्या इस तरह निकाल पाएंगे जी नहीं बिल्कुल नहीं Red team turret has been destroyed. गोल फ्लेक्स करते हुए मैट्रिक्स इजीली लोड को निकाल देगी Red team turret has been destroyed. ये तो अच्छा खासा ट्रेड कर दिया ब्लू टीम ने Red team turret has been destroyed. गाइस आप लोग मैच का मजा लो ना हम लोग का कमेंट्री को इग्नोर मार दो लाइक हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा टाइप का हम लोग का कमेंटेटर लोग थोड़ा बिजी हो गया इसीलिए हम लोग को करना पड़ रहा है हम लोग कल से पूरा ध्यान रखेगा कि वो लोग पूरा फुल टाइम में आओ बोल के पूरा फुल टाइम कमेंट्री कर दो बोल के बस लेगा लास्ट तक क्या ओके सॉरी थोड़ा सा ये बाथरूम ब्रेक में गया था हम मैच कास करके पेशअप भी कर रहा है और अभी मिड लेन में थोड़ा सा कुछ हलचल देखने को मिल रहा है लेंस का लेकिन ये बहुत
बढ़िया से कर रहा है। ओके सॉरी कैमरामैन अभी फोकस कर देगा। आई थिंक अभी ये लोग लोड ले रहा है। क्या रेड टीम कॉन्टेस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ये लेंस का लेकिन बहुत बढ़िया है। फिर से ब्लू टीम लोड लेते हुए अभी लग रहा है कि लेंस ये टाइप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा आगे आगे क्या होगा। करीता यहाँ पे एम्बुश करने की कोशिश करते हुए लेकिन मिनातोर ने उसे देख लिया। मिनातोर का सुंदर आगे और ये कॉम्बो बढ़िया से, लेकिन कोई टीम नहीं था साथ में, इसलिए ये लोग किल इतना नहीं ले पाया है। नसान मर गया है। लेंस कॉम्बो तो दे रहे हैं लेकिन भी नहीं हो पा रहे। और सुंदर स्किल से और लेकिन नाइस इसका लेंस का फिर से और शानदार, लेकिन ट्रिपल किल क्या हासिल कर पाएंगे, नहीं कर पाया लेंस तो दे रहे और ये और सुंदर। आई थिंक अभी उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हायाबुसा आ गया, क्या हायाबुसा लेंस का फिर से सुंदर सिंग, लेकिन कोई भी नहीं हो पाया। हायाबुसा को थोड़ा डैमेज देते हुए हायाबुसा अभी शायद रिट्रीट करेगा। एंड यू कैन सी लोड बहुत सारा टेरेस पुश कर रहे हैं, अभी तक टेरेस पुश कर रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस था कविता का टीम भी होते हुए, लेकिन ये सुंदर हाया का लेकिन नहीं कर पाया लेंस को। लेंस का बहुत लेंस ज्यादा ही प्रो है। लेंस आई लव यू लेंस प्लेयर। वैसे हमारा एक डाक्टर आ चुका है मिस्टर कोच। ओके कोच, हम आपको मिस कर रहा था बहुत देर से क्योंकि हम कमेंट्री नहीं कर पा रहा। So you can take over from here now. But मेरा यहाँ से हम लॉबी में घुसा था तो हम स्ट्रीम से कास्ट करना पड़ेगा, तो डिले होगा मेरा इससे। ओह कुछ नहीं कर दो दोस्त। नहीं डिले होने कहाँ, ये तो जो जा चुका वाला को बोल के क्या फायदा है। वही ऐसे होगा, इसलिए you guys should be continuing. मेरा तो सही है सामने मिस हो गया, लेकिन ये करीता लेकिन बहुत जंगल अंदर में कुछ कर रहा है। उसका सुंदर लेकिन इतना कुछ नहीं पाया, समझ नहीं आ रहा हमको क्या क्या हो रहा है। लेकिन इतना पता है कि ये ब्लू टीम डोमिनेट कर रहा है। ओके एंड लेंस का लेकिन रेट्रिब्यूशन स्किल बहुत बढ़िया है। दो टप्पल ले चुका है और दो ले चुका है। तुम दोनों को क्या लगता है कमबैक का कुछ है? हो सकता है। रेड टीम कमबैक देगा ना दोस्त, देगा कमबैक तो हो सकता है, लेकिन ब्लू टीम आगे से बहुत डोमिनेट दे रहा है, इसलिए थोड़ा इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा से करना पड़ेगा रेड टीम को अगर कमबैक करना है तो। ये लोग लोड का एक्चुअली ये जो लेंस है ना, ये लोग गाड़ी को हायर किया ना, तो वो जो नाम चेंज करके आया है, इसलिए मे बी हो सकता है कि ये साइड को मार दो। लेकिन अभी तो रेड टीम ले लिया है लोड को, लेकिन ले ले पाया है। ट्रेड ऑफ तो अच्छा हुआ है। दोनों का एक मर गया और इसके बाद रेड टीम ट्राई कर दे रहे हैं, बट अभी ये लोग का लोड स्पोन होते हैं। क्या लगता है रेड टीम का अभी सिर्फ एक ही इनहिबिटेड कर रहे थे, तो इसलिए ये लोग का पुश करने के लिए तो आसान होगा, क्योंकि साइड लेन में दोनों सुपर ये क्या सुपर मिनियन आ गया है। ये कुछ कम ये लोड क्लियर कर दिया इसे इतना जल्दी। आई थिंक शायद ऊपर तक तो प्लेन आया जो स्प्लिट पुश करने का ट्राई कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे? आराम से कर सकते हैं,
लेकिन वो चोट रिस्क लेने मत दिए। तो आई थिंक अभी फिर से खरीदा एम्बुश करते हुए देखा मिलते हैं। क्या ये लोग देख पाएगा? ये हमने तो कुछ चेकिंग करके लिया है। लेकिन हाँ अभी तो खरीदा को कैम्प करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे होने से बहुत कैम्प करके एक ये नतन को ही मार करने की कोशिश कर रहे खरीदा पहले से देख रहे हैं। एंड लेंस का सिंग बहुत सुंदर है। ये मिनाटोर उसने कोशिश की लेकिन अल्टी वेस्ट फ्लिकर भी वेस्ट। फिर से कदिता को ये देखा मिलते हुए इसका अभी अल्टीमेट मिस हो गया है। कदिता का एम्बुश बोन रॉन्ग। और ये रोक अच्छा कोशिश करने की कोशिश किया था लेकिन उसका भी अल्टीमेट हो गया। दोनों साइड बहुत सेफ खेलते हुए दोनों एक दूसरे को आजमाते हुए कौन किसमें कितना पानी इसमें ज्यादा था। सॉरी फॉर माय बैड कमेंट्री। हाँ कि हम कमेंट्री करने वाला इंसान नहीं है, हम तो सिर्फ स्ट्रीम करने वाला इंसान था लेकिन कमेंट्री वाला नहीं। ओके तुम्हारा भैया नहीं पकड़ते मेरा भैया तो इसको फॉर्चूनर पकड़ते हैं। कमेंट्री भी आया है। सो गाइस कीप ऑन सपोर्टिंग अस। लाइक करो, सब्सक्राइब मारो और बेल आइकन दबाओ। इसका अपना दोस्त लोग में भी शेयर करो। नेक्स्ट सीजन भी आने वाला है, उसमें थोड़ा ज़्यादा प्राइस होगा। हाँ इसका बाद ये हम लोग का टारगेट है दोस्तों। तो अभी लोड को लेते हुए लेकिन बिना तो काफी को लगे आया अभी इसका हायर सुंदर से लोड को लिया है। इसका ये खरीदा का एम्बुश करने वाला अभी कामयाब हो गया है। सुंदर से ले लिया लेकिन वो यूनोक्स को तो एंड आई थिंक अभी ये ब्लू टीम के लिए थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि उन लोग का नहीं ठीक है आराम से। आई थिंक लेकिन ये नातन उसके बहुत बड़ा गलती करते हैं। ये नातन ज्यादा ओवर स्मार्ट बन गया था क्यों उसे लेकिन ना पता नहीं, शायद आई थिंक मिस्टेक भी हुआ होगा। एक छोटा सा मिस्टेक जो गेम को ओवरथ्रो कर देता है। ये लपू घुसते हुए ये क्या करते हुए और सुंदर फॉल वाला स्टेप दिखाते हुए अभी लोड भी आ रहा है। ये लोग लोड को ले पाएगा, लोड को तो आराम से ले लेगा। जो जीतेगा फॉर्च्यूनर मिलेगा। सागरू करबूजो क्या होता है, जो जीतेगा उसको एक फॉर्च्यूनर देगा। ओके यू गाइस हर्ड सागरू करबूजो बोला है क्या? जो जीतेगा उसको सागरू करबू देगा। फॉर्च्यूनर एक देगा बोला है। और ये लेंस कोशिश तो किया था लेकिन मिस हो गया है और बॉटम में कुछ भी दिखाई मिल रहा है। गाइस हम लोग का कमेंट्री अच्छा है क्या? कमेंट्री अच्छा है तो सब लोग एक बार लाइक दबा दीजिए ना। कमेंट्री अच्छा नहीं है तो शेयर कर दीजिए। बस इतना ही बोलूंगा मैं। बस इतना ही ख्वाहिश। एक इतना छोटा सा ख्वाहिश को तो पूरा कर ही देना चाहिए मेरे ख्याल से। कैमरामैन फोकस करते हुए मिड लेन में ये लोग थोड़ा एम्बुश करके उसे नतन भी थोड़ा सेव करके मेरा भैया देगा। और इसका भैया दे तुम्हारा भैया देगा, मेरा भैया तो टेंग देगा। ओके अभी फिर से देखा है मिलके ये दोनों बहुत विजन तो दे रहे हैं लेकिन ना अच्छा से टेंग दोनों जो बहुत बढ़िया से। नहीं तुम बोलो कौन सा टीम जीतेगा? हम आई फेवर ब्लू टीम मेरे लिए टीम बम्बलबी मेरे लिए ESP लेट्स गो। अभी जो भी अगर जो टीम हारेगा ना जैसे बम्बलबी हारने से ठीक है सब मंजूर है।
कमेंटेटर लोग आप लोग बोलो कौन सा टीम जितने से अरे तुम लोग ज्यादा भी फॉर्मूला में है लड़की लोग ओके 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 ये हायाबुसा ने देख लिया ये लोग एम्बुश करने वाला तो इसलिए कमेंट दोनों लोग बहुत टीम दोनों एनिमी को आजमा रहे लेकिन ना बढ़िया से सुंदर से लेकिन ना देख के बहुत मजा लग रहा है ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग से जा रहे हैं आगे तो 22 मिनट भी हो गए लेट गेम हो गया सुंदर लोड लिया है स्लॉट ने कनिका सुंदर से किल लेके गए और सुंदर पीएस तो गयो अभी ग्रोक भी जाएगा ग्रोक जाएगा कि नहीं जाएगा ग्रोक बच गया लेकिन कितना क्वेश्चन काम को कर देगा बीच में लेकिन पुश करने के लिए मौका मिल गया था ओके कनिका लेंस ये क्या लापू को पकड़ गया और लापू को पकड़ के एक बार करो मैं तो पता नहीं ओके ये हम लोग का कैमरामैन फोकस नहीं कर पा रहे हो कैसे फोकस करना है समझ नहीं आ रहा है लेंस लॉट अभी किसी का यार तपना पाएगा क्या नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा इसको अभी ये ले लेना चाहिए आराम से इसका बाद अभी क्या ले जाएगा नहीं यहाँ पे और सुंदर से ओ राइट क्या था लेकिन लेंस का अच्छा तो लेकिन लापू किया है कभी तक किसी को मर पाया नहीं मर पाया है इसका बेस खत्म एंड टीम बम्बलबी गो अभी राम हम पेप्सी एक पिलाएगा पोलो पेप्सी राम है सेक्सी अभी इसका बाद नेक्स्ट टीम होगा अभी नेक्स्ट छोटा सा ब्रेक रुको ब्रेक मत लेना तुम दे दे क्या नहीं छोटा सा ब्रेक लेने से पहले हम बोल देगा हम लोग का स्ट्रीम में 100 लाइक्स होने से स्टारलाइट गिव अवे है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मारो और फिर अपना दोस्तों को भी शेयर करो आपको अगर ये स्टारलाइट पास चाहिए तो अभी एक छोटा सा ब्रेक लेगा ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे दूसरे टीम के साथ थैंक यू वाओ नाइस इससे और बढ़िया उनको इतना कमेंट्स भी दे देगा ना ओ भाई इतना देर ये सुन रहा था क्या कसम से सुना मेरा गजब मजा आ रहा कमेंट्री को सुना दिया हमने चलो अभी कौन जीता है बम्बलबी ना दुकान नहीं खुला दोस्त ना कैसे नहीं खुला दुकान बंद हो गया ना दुकान बंद हम गया था हम उधर से लेके आया था ये मैगी को कितने दूर से लेके आया वो क्या पता वो ये लोग का नहीं है तरह अच्छा का नहीं है वो एक अच्छा लोग को है हम क्या पे काम फास्ट भी आ रहे लोग भी प्यारा वो तुम नहीं खाएगा क्या नहीं वो तो सूप को दो सूप को खा ले सूप टेस्टी था वो मेरा चम्मच भी दो बस सूप और वो दो तो यहाँ से वो करो तो वो लड़की कोच को करो उसको कोच वो जो पूछता तो ज्वाइन करो कसम ये तमा का ये कमेंट्री पे 24 व्यू जाता है नहीं वो लोग का टीम है ना सब दोनों का सब लोग ESP बोल रहे हैं मजा नहीं आ रहा ऐसे व्यूअर्स वाला लोग टीम में साथ जाने से ना टीम ESP करिए अपवास हो गया था लेकिन को छोड़ के लेकिन कुछ लड़की का पीछे मत करो आया भगवान कमेंटेटिंग लड़की को कंटेंट दोना ज्यादा व्यूज आएगा टीम कॉम्पैक्ट मूवी नहीं है असली वाला कमेंट्री चाहिए जो थोड़ा कॉमेडी भी हो जाए ये जो
इसे वाले कॉन्वर्सेशन से ये तो आज बताओ हेलो नहीं ये आपको खोला था सॉरी ये तो प्रो से है नहीं मैं होती तो अच्छा अगर मैं लड़की होती तो अरे क्या बोलते हैं हम लड़का होता तो नहीं सहता हाँ हेलो हाँ जल्दी घुसो ना क्या क्या टीम का देखा टीम ESPN बम्बलबी का अरे अभी किसका हो गया फाइनल है ना सोलो मेरे लेकिन ना दोस्त कमेंट्री करने के लिए अरे ये और लास्ट पे लोग बोले कब जाएगा ना एंडिंग तो पूरा चांस कर देगा ना वो ये तो वैसे ऑनलाइन नहीं है तो फ्री विन हो जाएगा लगता है रुको ना ये लास्ट पेज को ओपन करो वो भी है तो आई थिंक ये तो नहीं आएगा क्या नाम कोई खराब है कहाँ में रैंक ग्लोबी में घुस के रखी है शुरू किया है क्या नाम है उसका सुन ये है ना ये भी नहीं कहते ये तो दूसरा टॉपिक में होता है ये तो 3 महीने तुला अभी स्टार्ट प्रेस कर देना बताओ हेलो ये आप वर्टेक्स ऑफ ड्रैगन का वो लीडर बोल रहे थे ना आ जाओ अभी आप पे ही है हम लोग रुक रहे हैं लॉबी में हेलो सुनने नहीं दे रहे हेलो हेलो हाँ ठीक ओके ये लोग डीकी करता बोल रहे हैं लीक लीक पे हाँ तो बता दो तुम बता दोगे एक बार माइक ऑन कर देता ना उसके बाद ये लोग को बुला देता ना लॉबी में इनवाइट कर देता एक तो बढ़िया सा कमेंट्री मार के चला जाऊंगा एंडिंग में हम उनको इनवाइट कर रहे हैं इनवाइट करो ना इसको एक्सेप्ट करो क्या मतलब से लोग रजिस्टर करते हैं ना पांडव प्लेयर्स को वो इन लोगों के साथ हम लोग टाइम पास खेल लेगा क्या ना कस्टम मतलब बता के ना ये लोग 5 भी हम लोग 3 हम तुम वो ये पीछे और किसी को बुला देगा ना चलो हम भी खेलेगा रहता तुम लोग ऐसे नहीं करेगा चलो अनाउंस कर दो ना हम वो कर रहे हैं स्ट्रीम कर रहे हैं एक सेकंड टीम डिस्क्वालीफाई हो गई रुक जा प्रोजेक्शन मार देगा ठीक है चलो Hello, ladies and gentlemen, welcome back.
ये थोड़ा सा नॉर्मल एक मैच नहीं चलने वाला है, बट लगता है एक टीम डिस्क्वालीफाई हो गई क्योंकि वो टाइम पे नहीं आ पाए, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत हम फन मैचेस करेंगे। तो आ जाओ अगर खेलना है तो। ओके, ये ओपनिंग को पता है क्या? हाँ एक बार बोलो उनको। कर रुक दे रहना पूरा रेडी करके। के थ्री मैन एक को इधर आने बोलो ना तो। अरे नहीं, यहाँ वो जो एनिमी से एक जन को इधर बुला लो ना। 4 अरे नहीं, हो गया, चलो चलो चलो, 4 हो गया। चलो 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 चलो। डन सीक्रेट है और फिर खत्म हो गया। हाँ, और उसे लेने के लिए क्या बोला? और निकलने का टाइम। Oh, let's go। हाँ बोलो ना। डन मेरे को ट्राई करना है। Welcome to Grog's Castle, tiny ये क्या friend. बोलते हैं, एक बार S3 से पूछ लो क्या ये है, क्या खेलता है। अरे Come on, let's roll! Your team is banning. Let's make the whole Your world team is green and banning. lively. अरे Do you have power in your account? No. I will give you tomorrow. You can see this guy is asking to me. अरे S3 से एक बार पूछो ना क्या खेलेगे। No, I'll give. Because I called my home, but people are there. That's why they're not. अच्छा ठीक है। कौन XP खेलेगा बोल रहा है? Your team is picking. तो हम जंगल ना? जंगल जाना है? ठीक है। हाँ, जंगल जा सकते जगह बोलने से।
OISS हमको थोड़ा मतलब क्या लगा ये थोड़ा assassin को थोड़ा अच्छा स्किन यूज करने का मन था इसलिए बहुत ज्यादा डेंजर है अरे खेलो खेलो, अरे मैं फिर मार्क्समैन जाएगा, मार्क्समैन का भी बहुत स्किन है, मैं वो खेलेंगा। ठीक है ऐसे देखना आया ये दोनों में से कौन सा का लेगा दोनों का स्किन बराबर रहता है और क्या है To me, fun is all that matters. Where the light shines, flowers Your will team bloom. is picking. May the blood of my enemies flow from my spear. Oh, Melissa. मींची तो डायरेक्ट ऑटो लॉक कर देते हैं तो इतना ऐसे फन गेम ऐसे नहीं करना नहीं No way. भाई इतना बोरिंग है ना मतलब फन गेम में ऐसे नहीं करना चाहिए ना तो डैमेज अच्छा से खेलना चाहिए ना क्या मिंजितर तो पुसी पी खेला जाने दो ला नु सुनने दो नु का वो व्यूअर को काम नहीं है मैं क्या डोंट माइंड असली के भी सुन रहे क्या वाओ Light me up and watch the world Your team burn. is picking. चाहेंगे खेलो ना वही हम बोलने के Let's play together. Your team is picking. रिप्लेसमेंट मिल गया मेरा यस Ayabasa, Sanjo. अरे बाप रे खतरनाक एक काम करती हूँ मैं बेस में बैठ के खेलती हूँ ठीक है बोरिंग है देना Pause. Welcome to Mobile Legends. चलो let's go guys 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. यार इसका All सेटिंग troops deployed. कंट्रोल एक मिनट रुक जाओ मूविंग परस्यूट अरे मीन से तार उठा के ज्यादा मत मारो बोल रहे हैं डैन भाई इधर मेरा फट रहा है कब से चलो गाइस गोल लेन में कुछ हो नहीं रहा है बट लैंडस्लॉट जंगल में एनिमी का हालत नहीं पता क्या है देखते हैं उनका एनिमी जाके रिपोर्टर 1 on live in the land of dawn अरे हायाबुसा दिख गया तो तेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा ना मतलब अरे बाप रे टीम में First blood. बढ़ गया
म्युनिसिपल भी आ रहा है म्युनिसिपल अलग अंदर हो गया ना तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता ना अच्छा हाँ देखा ऊपर उधर में लेवल 4 हो जा लेवल 4 अयो मरी गया ओक मारेगा ऐसे कैसे मर गए Blue team hero has been slain. nice one oh nice oh no ये तो गे हो गया Hero has been slain. आई अरे सर्वर कौन Hero has been slain. Killing spree. कोई नहीं अभी तक बच रहे थे कोई भी गे नहीं बना Red team hero has been slain. कोई नहीं कोई अच्छा आई तो मिस कर पाता नहीं अरे वो मार्क्समैन वाला बिल्ड बना दो चांगे Red team has slain the turtle. ये लोग के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा मगर ना बाप रे ऑलमोस्ट नाइस ट्राई अबे यार Red team hero has been slain. रुक जाओ हाँ Red team turret has been destroyed. हे यार
अपनी टीम को इतना खराब गेम करके मार रहे थे कौन? Killing spree. Oh no! ये तो पास से वाओ! Double kill. Blue team's turret has been destroyed. और अंदर में थी ताऊ अंदर थी कि उसके बाद तल्प मारे अरे ये मिशन अरे मिस्टर हमारा किसका नहीं है अभी तो सेफ अरे आई तो मैं किल तरतर ले रही क्या नहीं रहना चाहिए था Blue team turret has been destroyed. Has बोले slain the turtle. oh no अरे वो मेरे से बहुत मार रहा है Double kill. ये तो पूरा साथ साथ खेल रहा है हाँ मिलता का काम ये कौन खोल रहा है ओह हाँ 7-0 Melissa बहुत तकलीफ तो आसी अरे वाह मिलता Team hero has been slain. मैक्रो प्ले दिखा दो ले लो हाँ मैक्रो प्ले पूरा कर ये लोग नहीं सकेगा ना मतलब कितना तक प्रेशर प्रेशर साला डाल दो तभी लोग समझ क्वेश्चन बोले वो ब्लू के उधर है हाँ वो पीछे से हाँ ये मिंची कर माय गॉड दोस्त बड़े से वो कर दो क्योंकि बहुत ये लोग साथ साथ बेहतर है ना मिंची कर बहुत इजी अय्या मिस्टर फ्लिकर अल्ट नहीं बस मुझे तरी है कि ना से तो ध्यान रखना चाहिए आपको बस ले करें वो कंसील मार के आ रहा है मैं इधर
अच्छा Red team hero has been slain. Blue team hero has been ऊंची slain. गाड़ी भी आते ना इसका डायरेक्ट क्लिकर मार के आउट मारेगा पीछे खोती को ना पूरा धुन रहा हूं हां नीचे तो Oh my god, bro. Leave me. Red team hero has been slain. Red team turret has been destroyed. मैं मर गया तो बाहर यार Hero has been slain. ओ बढ़िया Hero has been slain. Hero has been slain. Red team turret has been destroyed. अभी वो अकेला है ना क्या नाम है कुछ यार मेलिसा Hey! Oh my god. Lillian. Yeah. वही तो चलो एक बार खेलेगा Blue team hero has been slain. थैंक्स लग Oh, nice. यार पलट नहीं है मेलिसा के पास sorry. Hey, fuck. Red team hero has been slain. मेलिसा बहुत फार्म हो गया हम कुछ भी नहीं कर सकते जैसे मिंचितर बहुत वो है ना ज्यादा मत हीरो है ना हमारे यहाँ मिंचितर बहुत दुखी हो रहा है बस सरकाज़म कर रहा है आराम से ज्यादा मत pretty sarcastic ट्वेंटी सेकंड रुक जाओ मेरा विंडो पे अपना स्पॉट से किसी को बुलाएगा क्या और ये 4 ना नहीं तो क्या रोज गोल्ड अभी तक है उसके पास वैसे कहने नहीं दे रहे थे इतना जल्दी क्लियर कर सकते हैं हाँ देख लिया ये भूषण कट्टा मिल रहा है ना
Don't pull it popped off. अल्ट हो गया मेरे साथ तो। Minster alt नहीं हुआ। हाँ मिंसितर है मिंसितर है। अरे बाप रे अरे बाप रे। Minster alt. On the पीछे मेरा अल्टी अरे और 2 सेकंड था। भैया मेरी से बहुत खुशी है। मेरी तो घुमाने लगा कोई नहीं है। Red team base turret has been destroyed. Engineer cushion. Recover what? Red team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. रुक जाओ। Red team base turret has been destroyed. Wait. थोड़ी मैच एक बार एक तो संस्कृत पे पता रखना। Killing spree. जल्दी आ जाओ। Minster alt use नहीं करता। पता नहीं है। Almost correct. Oh no! Oh no! Yeah. बेस जा रहा है। Legendary. Red team base turret has been destroyed. मैंने से फिट हो गया था ना। यार तकलीफ हो गई इसको मुझसे। कल लेफ्ट में हुए तो। हाँ।
ले तो अरे अरे और जोशी को बुलाने में ना मस्त हाँ हाँ ठीक है देखो हाँ एक बार हाँ उनको बोलो हाँ क्या बोल रहे हैं लोग सर आया आया बोल रहे हैं मेरा दूसरा बुलाएगा Can I play custom? Are you playing? Playing? Yeah, bro, you pause your game. One column to the game you want to play. Column loading like one page. One day? Okay. Where? What happened? Go on. What happened? I think this is like these people that time. आ गया. Push roll. Just play whatever you. No, आ गई. Time pass में. Bro, press ready. चल है. टिक टक ही है. तो इतना खास भी नहीं है. खास तो नहीं है इतना. Thorns remain Your should team petals is fall. banning. नील तो सबका में दिखा रहा है. हाँ. नहीं ये सीजन पूरा YSS ही खेल रही हूँ मैं. अरे यार रैंक अप करना है मेरे को नीचे नहीं जाना है. कर दो प्लीज बस हो गया. May the blood of my enemies flow from my spear. Popple and Koopa are the best Your partners team in is the banning. world. वो लोग अरे लैला Do you want to make friends with Nana? Your team is picking. नाना कौन बन के? Wow, person. Wow. The daughter of eternity Your leads team you is upward. picking. मेरे को दे दो हाइपर. ठीक है तुम जंगल करेगा तो कर सकते मैं हमको कौन सा They call me हम लिख भी करेगा अपना because I saved my nation from falling apart. whatever. When the body suffers, It's okay. Yeah, the spirit blooms. टेक्स्ट.
बोल मर्जी कर देगा बोल अब वो मैच Mighty oaks from little acorns grow. Tell me, like the opponents, they are playing in the tournament, and today their opponents like they are disqualified because they didn't came. So like now we are just playing. I am the moonlight that breaks through the darkness. We just lost against them, and we want to beat them so hard. There's only one that Homer guy. He was we are both of us. Others we all casters. Okay. Just play mage. Come on, Dexter. It's our show. Yeah, the team is kind of coming game. ये लोग तो खराब कॉम्पिटिटिव वाला पिक ले रहा था ये क्या बोलते ये 5 मैन जो एनिमी का एनिमी मिया को चढ़ के क्लोनॉक्स हो गया ठीक है I will choose my own path. Is banning. फालतू Welcome to Grok's Castle, कैसे हमको ये पता tiny friend. उसको पता चल गया था वो तो खत्म कर देते हैं I'm और born with your talent is जम दिखाएगा ये अरे बाप रे ये क्या है उनका टीम कॉम्पोजिशन वालो Butterfly is born by thy wish, guided by lantern's light. कोई देख रहा भी है क्या वो देखेगा एक दो इंसान क्या ही बोलेंगे अरे वाह Let them play the hero. I will be the truth this world अभी desperately हम भी है needs. तो इसलिए साइड से 4 हो गए क्या लिनक्स जंगल बहुत दिन के बाद देखने को मिलेगा Only love and night are everlasting. गिनी पर लगी ओ अरे भूल गया मैं होता है बड़ा कैसा हो रहा है ये लोग बहुत प्रो एक्टिंग खान डाइजेस्ट Welcome to Mobile Legends. अभी वो क्या बनता रहे मेलिसा बहुत क्या हेलो Smash them. then wah Yusong wah thank you Mlbb wow
आ रही हो थोड़ा तिरंगी है चलो ठीक है अरे मियाँ के लिए चलो मियाँ के लिए आजो मैं बोली तो आजो राम वो भाग रहे देखो वो कहाँ भाग गया क्लॉड जोड़ के चला गया जूते ना हाँ Red team hero has been slain. Wow, easy or what? Red team hero Not has bad. been slain. Nice one. Hero has been slain. Blue team has slain the turtle. Red team hero has been slain. Red team hero has been slain. Blue team hero has been slain. Easy or what color is no dear. Blue team hero has been slain. बढ़िया Has खा been slain. Wow, damage. अरे बाप रे Blue team hero has been slain the turtle. Red team hero has been slain. Oh, nice. जी मरेगा nice मिया गायब है ऊपर में Blue team turret has been destroyed.
lot damage by this Lunox. Red team hero has been slain. Ah, बचेगा. Nice. क्लिक वन साथ मारेगा एक बार. What did you think? Red team turret has been destroyed. पीछे रखो. टोटल मुश्किल है रहने दो. वो लोग बहुत जोन कर रहे हैं. हाँ चलो. Blue team hero has been slain. Blue team has slain the turret. Red team hero has been slain. इतना किधर हम डालो. Blue team turret has been destroyed. Red team hero has been slain. Double kill. Nice. Blue team turret has been destroyed. बता रहा. की जरूरत मियां बोल रहा था ना. हाँ. Oh no, what damage है. What damage is that? Damage. इधर में आके देख ले हमको देख ले. इधर लूनॉक्स भी है आगे में. हाँ. मियां वो देख भाग गया. रुक जाओ 16 सेकंड मेरा अल्ट आ जाए. आठ सेकंड. पूरा चेंज कर दिया. पूरा डर के भी खेल रहा है. अरे नहीं वेट कर रहा है. हमको देख लिया. Oh, usong gua din lagi. ये पेट्री खत्म हो गया. Oh no! Dago, nice. Let's go. Mia top.
चलो अभी हम लिखेगा क्या ना, इस वर्ड लिखेगा क्या ना? कुछ वाइट लिखा था। हम तो रिकॉल नहीं डाले थे मगर मेरा रिकॉल हम डालने दिखाई भी नहीं देगा। हम तो लिखेगा खत्म होने से पहले तक पोकते रहो वापस ना, वापस सरकास्टिकली पोकते रहती हैं। Oh yeah, Mia, one shot. Oh, this yeah. Nico. I think he's so bad. Red team hero has been slain. Well, basta dia deh Mia. Let it go in, go out. हाँ? बहुत फार्म है वो। और इंस्पायर खोल ले वो। ब्लू ले लो सुशील। वो नहीं सुनेगा। अरे हाँ नहीं आलती होगा। थोड़ा रुक जाओ, मेरा अल्ट नहीं आया। अल्ट थोड़ा चाहिए। Red team hero has गलती कर दिया। My bad, हम अल्ट मारने से अच्छा। Double kill. Red team turret has been destroyed. अभी हम बहुत गलती करते हैं, हम अल्ट नहीं मार के ना। Red team turret has been destroyed. Red team base turret has been destroyed. ऐसा नहीं हारना है मेरे को। Victory! लास्ट कल हाथ देना। सब लोग डायरेक्ट मतलब क्या लेगा वो कर देना, वो करना स्टिक था। डिस्कनेक्ट कर। हमें खुद बड़ा गलती कर देना लास्ट कल, खुद गंदा वाला काम कर दिया लास्ट में। तो मगर ठीक है, कुछ नहीं। थैंक यू। Nice.